बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा बड़ा ही एक प्रोडक्टिव इंटरैक्टिव सेशन रहा जिसमें बहुत सारे मेंबर्स की चीज़ें रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए गवर्नेंस के मुतालिक। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी बेहतरी में क्या किरदार हम अदा कर सकते हैं, आज उस पर गुफ्तगू करेंगे। बाकायदा आगाज़ से पहले अल्लाह ताला के पाक नाम से हम शुरू करते हैं और तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देंगे जनाब किफ़ायतुल्लाह साहब को कि वो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करने की सदर जनाब मोहसिन गिलानी साहब से इजाज़त चाहते हैं। इसके साथ हम अपने तमाम कांग्रेस मेंबरान को खुशामदीद, आज फिर खुशामदीद कहने से पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब रॉल्फ टैनर का और हमारे एएफसी से आए हुए हमारे साथी सोनम का। और इसके बाद आप तमाम को आज दूसरे सेशन में खुशामदीद कहते हैं। होपफुली आज का सेशन इंशाल्लाह हमारी कल की गुफ्तगू को ना सिर्फ आगे बढ़ाएगा बल्कि हम एक हतमी सोच ये हमारी एक बिल्ड हो सकेगी कि जिसमें हम पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को आगे लेके चल सकें। और मैं ज़हमत दूंगा जनाब सदर जनाब सैयद मोहसिन गिलानी, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट, कि वो अपनी गुफ्तगू से आगाज़ करें और फिर तकरीब को आगे बढ़ाएं। थैंक यू शाहिद भाई। तमाम कांग्रेस के मेंबरान, वाइस प्रेसिडेंट नवीद भाई और सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, रॉल्फ एंड सोनम, आई थिंक आज का जो दिन है वो बेसिकली फीफा के जो लोग हैं उनका है कि वो हमें इस बात से आगाह करेंगे कि कल जो उन्होंने बात की थी कि फीफा की ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपने स्टैचूज़ को मॉडर्नाइज़ करें और उनके फीफा पीएफएफ के स्टैचूज़ जो हैं वो फीफा के स्टैचूज़ के मुताबिक अलाइन हो, यानी उनकी हम आहंगी हो फीफा के कवानीन के मुताबिक। तो ये फ्लोर आज सारा उनको ही देना चाहिए। और हम ये करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं फिर हम उसको इस सेशन के एंड पे एक फ्लोर ओपन किया जाएगा और जो बंदा भी कोई क्वेश्चंस करना चाहता है वो आप डायरेक्टली फीफा के रिप्रेजेंटेटिव से करें। सो अली विल बी ट्रांसलेटिंग एंड उमैद दे विल टेक टर्न्स टू ट्रांसलेट। रॉल्फ, द फ्लोर इज नाउ ऑल योर्स। Yeah, nice, working, excellent, great. Yeah, well, happy to see all of you. If you're here today, it means that yesterday was an interesting session for you. We went over quite a lot of material yesterday. A lot of information was shared with you. But I think it's important to kind of give you a recap before we start going through the structure of the new PFF constitution. So yeah, that I would like to ask, go just over what we discussed yesterday, or the most important points before we start the presentation, yeah? Right, so Ali, I don't know if you want to translate before I go further. सबसे पहले वो आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनको बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब यहाँ हैं। और हम जो है प्रेजेंटेशन का आगाज़ करेंगे कल जो हमने सारी जो वर्कशॉप का पहला दिन था उसका एक छोटा सा रिव्यू के साथ, जो हमने कल बातें डिस्कस की थी।
So yesterday what we saw are the different mandatory principles that are enshrined in the FIFA statutes that PFF has also to comply with. We looked at minimum requirements, the 11 principles of Article 15, the obligations of PFF has in terms of in terms of FIFA statutes, also the AFC statutes. We also looked at the its constitution, so the directives given by FIFA and AFC to revise your constitution, as well as the obligation from a statutory perspective to revise your legal framework. कल की डिस्कशन चीज़ों पर मबनी थी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पीएफएफ स्टैट्यूट्स को अलाइन करने के लिए एएफसी और फीफा के साथ। हमारे लिए ये क्यों इतना अहम और ज़रूरी है कि हम ये करें। जो आर्टिकल 15 के 11 अरकान थे वो, और ये कि हम फीफा और एएफसी से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह अलाइन कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वक्त के साथ साथ फीफा ने डायरेक्टिव दी है पाकिस्तान के लिए कि आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जो चीज़ें हैं जो आपने करनी है रिक्वायरमेंट, उसका भी वो रिव्यू देंगे जो पहले वो वक्त के साथ का हमें डायरेक्टिव देते रहे। And today's session is about going through your future constitutions. We will look at the 83 articles, provisions that will be found in your future constitution. We will go article by article. I think for question of time or time management, we will go through that presentation first and then we can open the floor for questions. I think that would be better. At the end of the presentation, we'll take the appropriate time to go over any points that you would like to discuss. So if you want to write down any questions you have during the presentation, feel free to do so, and then we can discuss and answer those questions after the presentation. इन टोटल 83 आर्टिकल्स हैं जिन पर जो प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए जाएंगे। सवाल और जवाब जो है वो प्रेजेंटेशन के बाद होंगे, तो जो आपके सवालात हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो आप लिखते रहें, और फिर जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त आप सवालात कर सकते हैं। So today we will show the structure, the content, the general content of the different provisions or the 83 articles. We will not show the on screen the actual content because that would be too much information. I think we would need a couple of days to go through every single provision, but you will see on screen the most important contents of those provisions. So we will go into detail article by article so that you have a better understanding how your constitution would look like in future. Just for your understanding, the document that we've been working on, and also which the structure which will be provided on the screen, is the result of consultation between FIFA AFC, also PFF's input. So this is a document we're currently working on, or been working on for the past few weeks, and that will give you a very detailed overview of what will then be put to the PFF Congress for approval there. जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है हर आर्टिकल का वो आपके साथ शेयर होगा। ये जो हमने ड्राफ्ट किया है ये पीएफएफ, फीफा और एएफसी ने मिलकर किया है, और वो जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके अप्रूवल के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। And in terms of process, also for you to understand, because this is the process that we apply, FIFA and AFC apply for other member sessions. The draft is usually shared with the Congress members before the actual Congress to give the members time to provide feedback, and then the feedback would be then sent to FIFA and AFC. We will look at your comments, we'll see what comment can be taken into account. Obviously anything that goes against the mandatory requirements would not be taken into account, but whatever we think might make sense in the context of your new constitution would be carefully analyzed by FIFA and FC, and then if needed inserted in the final version of the draft. But the final version will look like pretty much we will end up with 83 articles most probably. जैसे ही
कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन फाइनल हो जाएगा वो कांग्रेस के पास आएगा, कांग्रेस को कुछ टाइम दिया जाएगा अपने कमेंट्स देने के लिए, सिवाय उन प्रोविजंस के जो मैंडेटरी है, जो आप लोगों ने करनी है, वो नॉन निगोशिएबल है, मगर अगर आपके कोई रीज़नेबल कोई पॉइंट्स होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, मगर जो मैंडेटरी प्रोविजंस होगी वो नॉन निगोशिएबल होगी, जिस पे अप्रूवल होगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। Okay, we can go to the next slide. So yeah, the objectives. So what are the objectives of the statutes? You can see them on screen, but it's pretty much a repetition of what we had yesterday. Yeah, your statutes will ensure that they are in line with the requirement of FIFA and AFC. You have to align your framework with the standards of FIFA AFC. This is clear. Statutes will also promote good governance, integrity, best practices within your member association, and your structure will be also strengthened through the adoption of those new statutes. But it's pretty much an overview of what we already discussed and saw yesterday on screen. Yeah. So I think we can go to the next slide. Yeah. Sorry. Yeah. Go ahead. ये वाली बातें पहले भी कल बेतहाशा दफ़ा डिस्कस हो गई कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टैट्यूट्स है पीएफएफ के, फीफा और एएफसी के साथ अलाइन होंगे, और उसके अंदर जो गुड गवर्नेंस है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो डॉक्यूमेंट की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो उसमें लाजमी होना चाहिए, और जो अलाइनमेंट होगी स्टैट्यूट्स की वो फीफा और एएफसी के कवानीन के साथ होगी। क्योंकि ये पहले कल डिस्कशन हो गई है, तो हम अगली स्लाइड पे आएंगे। Okay, yeah. So next slide, please. Yeah, so structure of the new PFF constitution, you will see it on the next slide. Sorry, there's an introduction before we actually look at the structure, but the new PFF constitution will be carefully structured to cover every key area of governance and football administration. This is important because we make sure that all the different mandatory elements that we discussed yesterday are covered, and also any other elements of best practice are also included in your statutes. The document will be slightly bigger than the current constitution you have, because we have to cover areas and aspects that actually are not contained in your current constitution or not detailed enough in your current constitution. Yeah. जो नई कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ़ुटबॉल की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सारे एरियाज़ कवर किए गए हैं। जो हमारी पिछली कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे ये बड़ी होगी, क्योंकि उसमें क्लॉजेस कम थे, इसमें ज़्यादा होंगे, और ये कि फीफा के जो मॉडल स्टैट्यूट्स हैं उसके हिसाब से इसको रिवाइज किया गया है। And as I said before, so the new PFF constitution is based on the latest version of the FIFA model statutes. So this is a document or blueprint we use for the revisions of all our member associations. So PFF is not an exception in this case. We're using the exact same document that we use. Just to give you an example, yesterday evening we had a congress in Haiti, where the new statutes of the Haitian Football Federation were adopted. This is also the same process that we'll be going through with PFF. The model statutes was used, and then comments were asked from the members of the federation, and once the comments were received and analyzed by FIFA and CONCACAF in that case, the document was put for vote yesterday. And the document was actually approved yesterday evening by the Federation's Congress in Haiti. Yeah. So same process we will be going through here in Pakistan. Yeah. अच्छा, PFF कोई अकेली फेडरेशन नहीं है जिसमें ये हो रहा है, ये फीफा की जितनी मेंबर एसोसिएशन हैं उन सब में ये क्या है कि वो कंप्लाई करें फीफा के मॉडल स्टैट्यूट्स के साथ। कल जो है वो हाईटी में यही प्रोसेस के तहत एक नई कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुई है, जिसमें पहले डिस्कशन हुआ है, फिर ड्राफ्ट शेयर किया गया है, फीडबैक ली गई है, और उसके बाद कल वो वोट पे गई तो वो अप्रूव हो गए। Okay, yeah, so we can now go to the structure. So this is the structure of your future constitution. Again, very standard structure with the general provisions, membership, honorary members, organization where we'll be dealing with the different bodies of PFF, your independent committees, so your judicial bodies and some other independent committees, disciplinary measures, arbitration, you know, what to do in case of conflict, a part on finance, competitions and rights in competitions, international matches and competitions, final provisions, and then we have the questionnaire
on integrity checks, which also nowadays is included in all the statutes of our member stations. ये जो डेफिनेशंस होती है, तारीफ होती है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनवा होता है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो उसकी प्रोविजंस होती हैं, जिसे कहते हैं आम ज़ाब्ते, उनको डिफ़ाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले। तो इसमें 11 उन्होंने डेफिनेशंस प्रोवाइड की होगी, हर जिसको आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले जनरल प्रोविजन जिसे कहते हैं आम ज़ाब्ता इखलाक। उसी तरह आपकी आती है मेंबरशिप, कि मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे हमारी ये कांग्रेस है, उसकी मेंबरशिप को डिफ़ाइन किया जाएगा, उसकी तारीफ़ की जाएगी कि क्या होगा। उसके बाद ऑनरी मेंबर, जिनको एजाज़ी तौर पे टाइटल्स वगैरह देते हैं, उसका तरीक़ाकार प्रोवाइडेड होगा। उसके आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होगी, उसकी बारे में बताया गया होगा। इसी तरह आपकी जितनी भी खुद मुख्तार कमेटीज़ हैं, जैसे आपकी जुडिशल बॉडीज़ हैं, आपकी इलेक्टोरल कमेटीज़ हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, जैसे कोई डिसिप्लिनरी केसेस होते हैं उनके रिलेटेड कि ये चीज़ें होंगी, डिसिप्लिन जिसकी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होती, अगर करेंगे तो ये इश्यूज़ होंगे। उसके बाद आर्बिट्रेशन है सालसी, जैसे आपका एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होगा, जैसे साले जैसे प्लेयर डिस्प्यूट्स, ऑफिशियल्स के डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट्स वहाँ पे जाएंगे। इसी तरह आपके फाइनेंशियल मामलात होंगे। उसी तरह आपके जो कंपटीशन और उनके जो राइट्स है कॉम्पिटिशन्स कराने के तरीक़ाकार प्रोवाइड किए गए होंगे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसी तरह आपके इंटरनेशनल मैचेस कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया जाएगा, किस तरह आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है, फीफा के कैलेंडर के साथ उनके तजादात ना आए। इसी तरह आखिरी फाइनल प्रोविजंस होती है, वो एक फाइनल प्रोविजन अभी आगे डिटेल में बताएंगे, मगर अभी मैं कहता हूँ उसको एंड पे पढ़ेंगे। और इसी तरह एक क्वेश्चन ईयर होगा इंटेग्रिटी चेक का, जैसे आप मेंबर हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं, आपके कोई इंडिपेंडेंट कमेटीज अपॉइंट होती है, तो उनकी इंटेग्रिटी के तरीक़ाकार बताए होंगे कि ये इंडिकेटर करेंगे पूरे तो आप एलिजिबल होंगे मेंबरशिप के लिए, इलेक्शन के लिए, वो आगे बताया जाएगा। So next slide, please. So general provisions, we start with Article 1. Next slide. Yeah, so legal form, headquarters, trademarks, these are very general principles. So where will be the headquarters of PFF, your legal form, which is important, official registered symbols, flag, emblem, and so on. This is usually contained in Article 1 of your statutes. अच्छा, आर्टिकल 1 में जो है आपकी जो लीगल फॉर्म है वो है, फिर आपका हेडक्वार्टर्स किधर है, आपकी जो एफिलिएशंस बेसिकली जो आपके फीफा और एएफसी के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो, और फिर जो है हमारे सिंबल्स जिसमें लोगो, हमारा फ्लैग और जो हमारी एब्रीविएशंस हैं वो आती हैं, जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का PFF। Next slide, please. The objectives of PFF, also it's important to have a clear list of objectives. What do you want to achieve as a football association? So these are pretty much standard objectives you can read at the same time on screen, things that you would find in the vast majority of other member stations. But you need to have an article on what are the objectives, why is what's the purpose and the goal of PFF at the end of the day. तो बेसिकली ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ुटबॉल का फ़रोख्त, इसी तरह फ़ुटबॉल की रेगुलेशन, फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट, इसी तरह जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, फेयर प्ले, और नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस आपके कैसे हैं फेडरेशन के, एथिक्स, फेयर प्ले और इंटेग्रिटी की प्रमोशन, अच्छी गवर्नेंस की प्रमोशन, और विमेंस फुटबॉल ख़ास तौर पे जो है उसकी डेवलपमेंट। Next one. Human rights, also an article on human rights. It is based also on what FIFA has in its own statutes. And by the way, if you go through the FIFA statutes or even the AFC statutes, you will see that many of these articles are actually pretty much the same. So we're using or inspiring the content of the PFF constitution with what we have in the FIFA and AFC statutes, including article on human rights, which is included in the statutes of all our member stations. फीफा और AFC के जो स्टैट्यूट्स हैं उसमें ख़ास तौर पे इंसानी हुकूक को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो PFF की भी यही कमिटमेंट है कि वो जो है इंसानी हुकूक की पासदारी करे और उनको अपहोल्ड करे। Next slide.
Non-discrimination and equality, we saw it yesterday. It's one of the core principles that you have to have in your statutes as a mandatory element. So there you will have a description of what we mean by non-discrimination, by equality. It will apply not only for PFF but also for the members of PFF. ये कि PFF के जो स्टैट्यूट्स हैं उनको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और वो बराबरी पर हों, जिसमें कोई बायस ना हो, और जो है बेसिकली ये मेंबर्स के लिए है कि उसमें किसी को किसी वजह से जो है ना एक्सक्लूड ना किया जाए या बाहर ना किया जाए. Next slide. Article 5, neutrality, institutional independence. Again, this is one of the core principles or mandatory elements that you will have to include. It focuses on the obligation to remain neutral politically and in a religious term, and its commitment to maintaining full institutional independence from any external influence, and also that obligation would apply to the members of PFF. इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कल इस पॉइंट पे बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि जो PFF है एज एन इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करना है, ख़ुद मुख्तार रहना है, किसी किस्म की पॉलिटिकल या कोई मज़हब से रिलेटेड कोई भी इंतशार वगैरह नहीं आना चाहिए, ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए. यही फीफा की एक रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेशन है कि तमाम मेंबर एसोसिएशन ने ख़ुद मुख्तार रह के अपना काम करना है, किसी के भी बातों से, फैसलों से, एक्सटर्नल जो बाहर की जो फोर्सेस होते हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना. Article 6 on the next slide, promoting friendly relations. Well, this is a general article on also one of the goal of PFF to promote friendly relation, ensure fair mechanisms for resolving internal disputes. This is important because PFF has to provide the means or the mechanisms needed for any internal disputes to be settled through its independent committees. So this reinforces this obligation that PFF has. PFF must provide the necessary institutional means to resolve internal disputes that may arise between its members, club officials and players. Those mechanisms will be present in the new constitution, and we'll have a look at them later in the text. देखिए PFF का एक और काम है कि जी वो दोस्ताना ताल्लुकात हों स्टेक होल्डर्स और उसके मेंबर्स में, और ये भी कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए एक फेयर प्रोसेस हो उनको रिजॉल्व करने का. और ये जो चीज़ें हैं ये मेंबर्स, क्लब्स, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसका जो जिस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे ये भी एक पार्ट होगा नई कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज होगा. Article 7, next slide. Players, also a disposition on provision on players, so status of players, registration, transfers, which should be regulated or must be regulated in line with the FIFA rules. And your own regulation, you should also have regulations on status of transfer of player, and also through the PFF Connect. I think there the mention is clear that you have a system in place that will also be incorporated or confirmed, let's say, in your future constitution. इसमें बताया गया है कि एक आर्टिकल इसमें लाजमी होगा जिसमें प्लेयर की रजिस्ट्रेशन, प्लेयर की ट्रांसफ़र और जो प्लेयर के जो स्टेटस है, जो मामलात है सारे, वो पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट के थ्रू देखे जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इन बिल्ड मैकेनिज़्म है जो अडॉप्ट किया हुआ है हमारी फेडरेशन ने, और उसके मुतालिक फेडरेशन अपनी रेगुलेशंस भी बना सकता है जो फीफा की रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करेगी. ये नहीं कि कोई डिस्टॉर्टेड रेगुलेशन हो, मगर उसकी जो कंप्लाइंस होगी वो फीफा की रेगुलेशंस के साथ होगी. Article 8, laws of the game. Well, general provision on the obligation to respect the laws of the game. So we have different laws of the games because we have, football association, football, but also futsal and beach soccer. So this is also a mandatory element, which is part of the 11 principles of Article 15 of the FIFA statutes. अच्छा, जो कवानीन हमने फ़ुटबॉल के और फुटसॉल और बीच सॉकर के मानने हैं ये भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा. फ़ुटबॉल में जो है IFAB है जो फ़ुटबॉल के रूल्स बनाती है, फुटसॉल और बीच सॉकर के जो रूल्स हैं वो फीफा बनाती है, तो इनके साथ भी कंप्लायंस इंश्योर करनी है. Article 9, conduct of bodies, officials and others. This is a provision on the obligation of bodies, but also officials to comply with the FIFA, AFC and PFF statutes. So any member
of PFF bodies must comply with those statutes, it reinforces this obligation that you have as committee members at any level. And also discusses well the importance of upholding ethic, integrity and fair play within PFF. जितने भी PFF की बॉडीज़ हैं ऑफिशियल है और जो भी PFF के साथ कनेक्टेड है, अब बॉडी से मुराद है, ऐसे हमारी लेट से पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन वो एक बॉडी है, उसने फीफा और AFC के कवानीन को मानना है, उनके साथ अब चीज़ों की डायरेक्टिव्स की कंप्लाइंस करनी है ताकि फेयर प्ले और इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया जाए और ताकि हम फीफा और AFC के कवानीन को साथ लेके चलें. Article 10, official languages. Also, you will have the typical provision on what language is the legal the legal language, or based on usually the law of the country. And if you have more than one language, then which language shall prevail, and also in which language the document should be made available. ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है. ये भी देखा जाएगा कि PFF के आइन में, पाकिस्तान के आइन में, और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और कौन कौन सी लैंग्वेज हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है ताकि वो आगे यूज़ होया करे. Article 11. So now we start membership, an important part of your constitution. The first part was more on legal staff or legal status, headquarter, and so on. Here is about the membership, so it's about you, or the future you, let's say, regulating admission to PFF, and other aspects that belong to being part of PFF. So Article 11 first, 11, admission, suspension, or loss of membership. So we need to regulate what it means, or how you can become a member of PFF, how you're suspended also, if it happens, and also to have provisions on loss of membership, which can happen in case of dissolution, for instance. अच्छा, इसमें बेसिकली जो डिस्कशन में आएगा वो ये है कि मेंबर्स PFF में कैसे आ सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि क्या वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पे वो सस्पेंड हो सकते हैं या एक्सपेल हो सकते हैं, और जो है बेसिकली जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं जिनके अंडर मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो सकती है. Article 12. So members, there you have where you define who are members of PFF. Information, where is information recorded? Also, you will have, as a member, you will have to provide PFF with certain data, the list of officials, your legal status, a copy of your statutes, and so on, and how membership status can be verified. So all these elements will be present and are dealt with under Article 12 of the Constitution. इसमें बताया गया कि PFF के मेंबर्स कौन हैं और उनका लीगल स्टेटस क्या है, उनकी लीगल फॉर्म क्या होगी. लीगल स्टेटस और फॉर्म से क्या मुराद है कि आपका लीगल वजूद क्या है. जैसे कंपनीज होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उसके लिए एक ऑफिशियल रजिस्टर होता है कि इस डेट में इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई, प्रॉपर एक रजिस्टर और डिटेल्स होंगी. जैसे पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन है, हमारे पास उनका एक प्रॉपर ऑफिशियल्स का रजिस्टर होना चाहिए, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, कब आए, कब जा रहे हैं, कब इलेक्शन होगा, और इनके स्टेटस की एक वेरिफिकेशन का तरीका होना चाहिए कि ये कैसे इन्होंने अपने आप को सेटअप किया हुआ है. ये हर मेंबर के ऊपर, जो हमारे मेंबर होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा. Let's go to Article 12. Well, this is an important one. Well, it's also part of Article 12, where we have a list of the members. So here on screen, and that's important to note, this is probably the major change that you will see in this document. We have here on that side the current membership, so your current composition of the PFF Congress. And on the other side, you will see the new membership. Just before I go through the different members, it's important to go back to what we discussed yesterday. The FIFA statutes are quite clear on this, that every member association has to incorporate in its own structure the relevant stakeholders. So any stakeholder that exists that are relevant for football, be it futsal, beach soccer, women's football, the players, club association, if there's any league, and so on, should be represented in your Congress. This is also something that FIFA and AFC feel very strongly about. You have to identify as federation which are the actors, which are the stakeholders in your country, because this is precisely to
make sure you comply with the requirements imposed by FIFA that you should be governing and supervising football in all of its form in your country. So not only classic football, but also futsal and beach soccer. This is also an obligation. अच्छा, फीफा और एएफसी के कवानीन के मुताबिक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में होनी चाहिए. अब इनमें जो पीएफएफ ने और चीज़ें की हैं उनमें ई फुटबॉल आ गया है, बीच सॉकर आ गई है, फुटसॉल एसोसिएशन है, इसी तरह प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए. ख़वातीन की फ़ुटबॉल पे काफ़ी एम्फेसिस है, तो विमेंस फुटबॉल एसोसिएशन होनी चाहिए कांग्रेस का हिस्सा. इसी तरह लीग जो है वो भी कांग्रेस का हिस्सा होनी चाहिए. Okay, so you will see, well, currently you have 4 types of members. So you have the provinces or the territories, which is, I would say, the most important members currently. You have also the departments who are very important, historical members of PFF. You have the Pakistan Football Referees Association, which is also part of your Congress, and you have also women representatives. There where, as we know, there's some question marks on how to deal with the aspect of appointing women's representative within your Congress. The statutes are actually not quite clear on this. We will bring with the new PFF constitution clarity on how members are admitted. As you can see from that list, there are new actors. So we have, well, the same historical actors which haven't disappeared. They're part of the football landscape, very important part of the football landscape, but we have other actors that in FIFA and AFC's view should also be included in your Congress in future. So we have the Pakistan Players Association, we have the Pakistan Women's Football Association, the Futsal Association, the Beach Soccer Association, E-Football Association, the Veteran Football Association, and finally the Pakistan Football League, which also be a member of PFF Congress. पीएफएफ की जो कांग्रेस है उसकी करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि उसमें प्रोविंसेस होते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स हैं, रेफरीज हैं और विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की अपॉइंटमेंट पे पहली कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो जो नई कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको एड्रेस किया जाएगा. जो नई मेंबरशिप है उसमें प्रोविंसेस, डिपार्टमेंट्स, रेफरीज तो हैं ही. उसके अलावा जो नई एडिशंस हैं उनमें प्लेयर्स एसोसिएशन है, क्योंकि प्लेयर्स एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है फुटबॉल सिस्टम का. इसी तरह विमेंस फुटबॉल एसोसिएशन है, फुटसॉल है, बीच सॉकर, ई फुटबॉल, वेटरन्स की एसोसिएशन और जो हमारी लीग है उसके नुमाइंदे भी होंगे पीएफएफ कांग्रेस में. Article 13, admission. So this article will deal with the process of admission. How do you admit new members? What are the requirements? What sort of requirements new members should comply with? The documentation. In future, you will have to submit a copy of your statutes if you want to become a member. Also, certain commitments that you have to comply with the laws of the game, with the statutes, regulations, FIFA, IFC, PFF. We want to have those commitments to make sure that the new members understand that they have to abide by the rules. It's like we were saying yesterday, a football game. If you become part of a club, you have to comply with certain rules. You get you get rights, but also you have to comply with certain obligations. Yeah. Yeah. But when you say the procedure for applying for new membership, I understand that, including the required, let's say, if there's a new member of the PFF, they need to have a constitution, they need to fulfill these requirements. What about the current members? Like, we have provinces who are current members, Yeah. referee associations who are current members. Departments are different because they have already their rules and regulations. Yeah. They're operating in their procedure. But for example, the referee association or the provinces, they would also be required to have constitutions. Yes, well, this is dealt with later. You will see that there is a transitional provision. The existing members would be given a time frame to comply with those requirements. You know, it's not the case that it will apply immediately. The existing member needs to adopt. We will have to define also with AFC the time frame and PF based on the reality, also on maybe the complex process of adopting statutes. But FIFA AFC usually will be assisting PFF
in with also blueprint for your provincial associations. We could provide in future, if needed, a document for this. You will be given sufficient time to comply with this requirement. But in future, new and old members will all have to comply with the same obligations. It wouldn't make any sense to treat members differently. You know, some can get away with that obligation, don't need any statutes, and the new members need statutes. It wouldn't be fair on the new members, but you will be given sufficient time to adapt. इसके दो पॉइंट हैं. नंबर वन, जैसे अभी एक मौजूदा मेंबर्स हैं, लेट्स से पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, और इसी तरह जैसे आज हमारे यहाँ पे एक नई एसोसिएशन ऐड होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ फुटसॉल एसोसिएशन, उसके एडमिशन होने में उसका एक तरीका कार प्रोवाइडेड है. वो एक डिक्लेरेशन देगा कि हम लिख के कि हम फीफा कवानीन को मानते हैं, हम इसकी पासदारी करेंगे, हम कास की अथॉरिटी को मानते हैं, हम जो लॉज ऑफ द गेम्स हैं उसकी रिस्पेक्ट, डिक्लेरेशन का तरीका कार होगा, फिर उसकी आगे एडमिशन होगी, उसको एज अ मेंबर तस्लीम किया जाएगा. दूसरी बात, प्रेसिडेंट साहब ने क्वेश्चन किया था कि ये तो चले नए मेंबर्स के लिए हो गया, जैसे हमारे पुराने मेंबर्स हैं जिन्होंने इसकी कंप्लाइंस नहीं की, उनके लिए क्या तरीकाकार होगा? उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उनको मगर कुछ टाइम दिया जाएगा कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आपने इन क्राइटेरिया को पूरा करना है, जो अभी आगे जाके डिस्कस होगा लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में. Article 14. So request and procedure for application, you have to define in your statutes how you submit requests for membership, how your application is dealt with. There should be a clear process on how this should unfold. So you have different stages from receiving applications, usually at the level of, well, the administration receive applications would then be channeled through the EXCO with a recommendation to be made to the Congress. The Congress being the final body or the authority to take the decision. It should be up to the Congress members to decide if they should or should not accept a new member. That's their final decision. But there is a clear process in the statutes, which you will see in detail when you see the document for yourself, that defines the process for admission. जैसे अभी हमने आर्टिकल 13 पढ़ा एडमिशन के, एक मेंबर कांग्रेस में आता है, मगर उसकी एप्लीकेशन का तरीका क्या होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होगा, एक्सको का क्या रोल होगा उसकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने का, और फिर जो डिसीजन मेकिंग है उसकी फाइनल वो कांग्रेस किस तरीके से करेगी, वो इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, बता दिया जाएगा. Article 15, an article on members' rights. This is very important because that article will list the different rights you have as a member. We listed the most important ones. Documents for question of transparency, so you will have access based on the new statutes on certain documents and information that you should get access to as members. Involvement in competition, obviously you have the right to take part in the football competitions organized by PFF, and there are other entitlements under the PFF statutes and regulations, which are not listed here, but which will be contained as well. Membership rights. ये एक आर्टिकल 15 एक प्रपोज किया गया है, जैसे हम फीफा के मेंबर हैं, हमारे कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और हम उसके बदले क्या चीज़ें एंजॉय करते हैं उनका मेंबर होने की, इसी तरह जैसे हमारे मेंबर्स होंगे उनको क्या क्या उनके राइट्स होंगे, वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे फेडरेशन के, उनको इन्फॉर्मेशन तक रसाई दी जाएगी जो रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन होगी. उसी तरह जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेट्स से लेस्टरचाइज कप होते हैं, उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन होगी एज अ मेंबर, और इसी तरह और भी जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंटरनल रेगुलेशंस में, वो एक अलग से भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. Article 16. So if you have rights, you also have obligations. Compliance with the statutes regulation FIFA, AFC and PFF, this is most probably the most important obligations. You have to comply with those rules. Also an obligation to implement good governance into your own structures. You also have the obligation to participate in competitions. You cannot just say, oh, this year I am taking part in a competition, but next year I don't want to. Financial duties also, which are important, respect of the laws of the game, independence. You also have to
remain independent from third-party interference, and other obligations that will be listed, reporting requirements, adherence to integrity and fair play principle, and so on. Yeah. अच्छा, मेंबर्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें सबसे पहला बेसिक वही रूल है कि फीफा और एएफसी और पीएफएफ के स्टैट्यूट्स के साथ जो है कंप्लाई करना है. इसी तरह अच्छी गवर्नेंस ज़रूरी है. पार्टिसिपेशन कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है. फाइनेंशियली भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो डिस्कस की जाएंगी. फिर इसी तरह गेम के जो लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करना, खुद मुख्तारी जो है वो बहुत ज़रूरी है. और इसी तरह जो है इंटेग्रिटी और फेयर प्ले प्रिंसिपल्स पे जो है उनको भी मानना हर मेंबर की एक ऑब्लिगेशन है. Article 17, suspension. This defines the process for a possible suspension of a member. Here we are talking about not a private person, but the suspension of a member. So a legal person, a member of PFF Congress. You need to define the process. It's one thing to have suspension, but also you need to define the majority, how suspension is then dealt with, which body is actually entitled to suspend a member. That would be the Congress, entitled to suspend a member. That's your decision at the end of the day. इसमें एक सस्पेंशन का तरीकाकार प्रोवाइडेड किया जाएगा. बताया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किस मेंबर को सस्पेंड कर सकती है. दो किस्म के मेंबर्स होते हैं कवानीन में. एक होता है लीगल मेंबर जो एज अ कंपनी रजिस्टर होता है, एज ए एसोसिएशन होता है. एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे हम हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे कोई है. तो एग्जीक्यूटिव कमेटी वो नेचुरल पर्सन नहीं होगा, जैसे प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है. कुछ मेंबर जो एडमिटेड हो गए उनको एग्जीक्यूटिव सस्पेंशन का कोई क्राइटेरिया होगा. अगर वो कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही होंगे तो एग्जीक्यूटिव वक्ती तौर पे करके कांग्रेस को केस भेज, उसका एक क्राइटेरिया होगा, तरीकाकार होगा. ऐसे नहीं है कि पसंद नहीं आया तो उसको सस्पेंड करके कांग्रेस में भेज दिया. नहीं, एक तरीकाकार प्रोवाइडेड होगा, मगर वो आम आदमी नेचुरल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर वो बताया जाएगा क्या तरीकाकार होगा. Article 18, expulsion. This is mentioned, but it rarely happens. This is not a suspension. A suspension is suspending your rights for a particular period of time. Expulsion is you are excluded from PFF, so you are no longer a member, and then you have to reapply. If this were to happen, you would have to reapply and go through the admission process again. Yeah, but again, this is kind of rare. We need to have it in the statutes, but out of our many associations, it happens practically never. Yeah. एक एक्सपल्शन, एक मेंबर है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर वो कोई ऐसा काम कर देगा जो कि फीफा, एएफसी, पीएफएफ की कुछ कवानीन की बहुत संगीन खिलाफ वर्जी कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है, फिर कांग्रेस उसको 3/4 मेजॉरिटी के साथ उसकी एक्सपल्शन पे कोई डिसाइड कर सकती है, मगर उसके लिए वर्ड्स पे स्ट्रेस किया सीरियस और रिपीटेड वायलेशन. तो उसके लिए कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो कि कांग्रेस उसको 3/4 मेजॉरिटी के साथ उसको एक्सपेल कर दे, उसके लिए वो भी मैकेनिज्म प्रोवाइड डिफाइन किया जाएगा. Article 19, resignation. You also need to deal with a possibility of a member resigning. It doesn't happen very often, but you might have a certain reason, the need for a member to resign. So you have a process, also a special provision to deal with the resignation. So notice requirement, the need to fulfill certain obligations before you can resign. If any amount is due to PFF, for instance, so that the article deals with this. Yeah. Is it applicable on both legal and natural persons? No, here we are talking only about legal persons. Yeah. I mean, as a natural person, you cannot really resign. Yeah. I mean, legal terms. Yeah. Yes. This is only for PFF Congress members. Understood. Yeah, a good point. इसी तरह एक रेजिग्नेशन तरीकाकार है. लेट्स से यार पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन बैठती है और इनके एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस फैसला करती है कि हम पीएफएफ की मेंबरशिप से रिजाइन कर रहे हैं, तो वो नहीं है कि रिजाइन कर दें खत्म हो जाएगा. नहीं, कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेट्स से कि आपने पहले एक प्रॉपर नोटिस देना है कि जी हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं, वक्त देना है. फिर पीएफएफ उसको डिटरमिन करेगा कि अगर आप रिज़ाइन दे रहे हैं तो आपकी कोई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन चीज़ें पेंडिंग तो नहीं रहेगी, आपने कुछ हमारा कर्ज या कोई चीज़ वापस तो नहीं करनी. जब तक वो फुलफिलमेंट नहीं हो जाएगी तब तक आप रिज़ाइन नहीं कर सकते. ये तरीक़ाकार है और ये लीगल पर्सन के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर नहीं है. Article 20, dissolution. Also in legal terms this can happen. So you have a
a member that ceases to exist, you also have to deal with this in your statutes. So this solution can be due to maybe a court decision or the association becoming bankrupt in some cases. So you also have an obligation to notify PFF if this were to happen. Yeah. लेट्स से आजकल बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन कहते हैं कि हम अपनी एसोसिएशन ही ख़त्म करने लगे हैं, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, बस बात ख़त्म है। तो उसके लिए आपने पीएफएफ को नोटिफाई करना है। उसके रीज़न हो सकती हैं, आप बैंकरप्ट हो गए हैं, आपका कोई इशू आ गया, आपकी मजबूरी हो गई है, कोई आपका डिस्प्यूट पैदा हो गया जिस वजह से आपको उसको डिसोल्यूशन के इसको बंद करना पड़ रहा है। उसके लिए आपने पीएफएफ को सबसे पहले आगाह करना है कि इसके रीजंस क्या है। उसके लिए आपने पीएफएफ को सेटिस्फाई करना है। एकदम आप उसकी डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। आप बताएंगे कि क्या मसाइल, क्या चीज़ें हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या आप उसको कह रहे हैं, कर सकते हैं, मगर उसका भी एक तरीका कार है। Article 21, an important one. This is about the independence of members. So again, the members of PFF, so the PFF Congress members and their own bodies, so members and their bodies must operate independently with democratically elected or appointed leadership. And decisions by non-compliant bodies are not recognized by PFF. So if one of PFF member failed to have elections or elections that cannot be recognized by PFF because they are not democratic for a particular reason, then PFF could take a decision not to recognize the outcome. This is also what we have at FIFA and AFC also. If we are not satisfied with the process that was taken, that was carried out at the level of one of the members, FIFA can decide not to recognize the outcome. But this is quite unusual, but we need to have a provision dealing with that particular aspect. इसी तरह जैसे हमारा कोई मेंबर है, कोई एसोसिएशन है, वो अपने इलेक्शंस करवाती है, उसने तो सबसे पहले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है। आप खुद मुख्तारी अपनी उसको इंश्योर करना है कि आप खुद मुख्तार हैं, आपके इलेक्शन होते हैं, आपके अपॉइंटमेंट का एक तरीका कार है। अगर आप कोई ऐसा फैसला करते हैं, अपना इलेक्शन कराते हैं जो पीएफएफ की नॉलेज में नहीं है, पीएफएफ को नहीं पता और पीएफएफ उसको नहीं मानता, तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जैसे हम फीफा है, जैसे हम आज फीफा की और एएफसी की नॉलेज के बगैर इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, उनकी नॉलेज में नहीं है, तो उन फैसलों को नहीं माना जाएगा। Article 22, status of clubs, district, provincial associations, and other groups of club. So that article establishes that all these entities are to be subordinate to PFF. They must align with the statutes. This is to guarantee that we have a coherent system, that any actors below PFF comply with certain rules, so that we have harmony within the football community in a particular country. ये आर्टिकल 22 है, इसमें एक चीज़ वाज़िया की जाएगी, जैसे आपके क्लब हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सूबे हैं, वो पीएफएफ के अंडर आते हैं। वो पीएफ एक हायरार्की से फीफा, एएफसी और आपकी मेंबर एसोसिएशंस आती हैं। इसी तरह आपके क्लब, रीजन, सूबे सारे पीएफएफ के अंडर आते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। पीएफएफ पाकिस्तान में अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है फुटबॉल की, जिससे फुटबॉल चलानी है। इंडिपेंडेंस अपनी जगह है, मगर ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आप पीएफएफ के अंडर आते हैं और पीएफएफ की चीज़ें मानना आपके ऊपर लाजिम और मलजूम है, जिस तरह हमारे ऊपर फीफा और एएफसी की मानना। Article 23, then we get to the part, well, which I would say is less relevant, but also can come into play at some stage. Honorary member, the article deals with the process of appointing or giving the title. It's more an honorific title to certain persons who have contributed to football in Pakistan. So the article describes in detail the process for such members to be confirmed. This is a right of the Congress, so the Congress take that decision. Nobody else. You will have then to confirm whether somebody gets the particular honorific title. जैसे कुछ फेडरेशंस होती है, कुछ एजाजी मेंबरशिप होती है, ऑनरी प्रेसिडेंट जो भी होता है, उसका अल्टीमेटली फैसला कांग्रेस के पास आएगा, मगर उसकी नॉमिनेशन तरीक़ाकार क्या होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सप्लेन में आगे बताया जाएगा, मगर इख्तियार कांग्रेस के पास रहेगा उसको एजाजी टाइटल देने का। Then we move to organization. So this is also a very important, crucial part of your statutes. The next article, I think is Article 24. Next slide, yeah. This is the main list of your body. So this is how your federation would look like in future. You still see that
you know, some of the main body or the main bodies are still there, but we've added a few others. So the Congress, the supreme and legislative body, your EXCO, which will act as a strategic and oversight body, the General Secretariat, the operational executive and administrative body, the standing committees. We've redefined also the list of standing committees in your statutes with more requirements for members of standing committee, the club licensing bodies, which should be in line with or must be in line with the regulations of AFC, the independent committees, which are composed of the judicial bodies. So you will have 2 judicial bodies within the Discipline and Ethics Committee and the Appeal Committee. And as part of the independent committee, you will have the ACC, Audit and Compliance Committee. I couldn't write it in full. And also the Electoral Committee, which is part of the independent committee. Currently, you don't have any electoral committee. This will change with the new PFF statutes. You will also have to adopt a new electoral code that regulates the responsibilities of the electoral committee. इसमें बताया गया है कि पीएफएफ की बॉडीज़ कौन कौन सी होती है जो पीएफएफ के साथ मुंसलिक होती है, कनेक्टेड होती है। सबसे पहले आपकी होती है कांग्रेस, जो सुप्रीम और लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब जो कानून बनाती है। उसके बाद आती है आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो देखती है कि कानून जो कांग्रेस ने बनाया है कि उसकी कंप्लाइंस हो रही है। उसके बाद जो आपकी एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी होती है वो आपका जनरल सेक्रेटेरिएट है, जो आपकी पीएफएफ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें स्टाफ एम्प्लॉयज़ सारे आते हैं। उन्होंने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है और उनको आगे प्रोसीड करना है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये 3 तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल है। चौथे आ जाती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट और एग्जीक्यूटिव कमेटी को एडवाइस करना होता है कि हम आपको ये एडवाइस करते हैं, देख लें ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी का काम है, वो आपको एक गाइडलाइन और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद आपकी एक क्लब लाइसेंसिंग बॉडी, के जो क्लब लाइसेंसिंग का सिस्टम है वो बॉडीज़ किस तरह होंगी, और उनका अपना एक मैकेनिज़्म होता है कि क्लब एज अ अपने आप को एज अ क्लब, या तो उसमें यस होती है क्लब की, ठीक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो यस होगी या नो होगी, कि क्लब आया एडमिट हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंट कमेटीज़ आती है। इंडिपेंडेंट कमेटीज़ में कौन सी, आपकी इलेक्टोरल, जो इलेक्शन करवाती है। इसी तरह आपकी जुडिशल बॉडी, जो आपका अदालती निज़ाम, 2 टियर होते हैं, डिसिप्लिनरी और अपील कमेटी। उसके बाद जुडिशल बॉडीज़ को उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि आपकी 2 बॉडीज़ होंगी पीएफएफ लेवल पे, एक डिसिप्लिनरी एथिक्स कमेटी जो मौजूद है अभी भी, और इसी तरह आपकी उसकी एक अपील कमेटी है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि ये जो आपकी जो बॉडीज़ है ना, ये तो यहाँ इनका इलेक्शन भी हो सकता है या ये अपॉइंटेड भी हो सकती है, उसका तरीक़ाकार प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इलेक्शन हो रहा है तब भी तरीक़ाकार होगा, अगर उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका भी तरीक़ाकार होगा। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो भी इन बॉडीज़ के मेंबर होंगे ना, उनका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई किसी भी अनएथिकल किसी कंडक्ट में इन्वॉल्व ना हो, तो जिससे इंटेग्रिटी और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उससे बचा जा सके। Article 25, this is about the process that will be put in place for dismissal of a member of a body. Here we are talking about a physical person, so a natural person, a member of a body. So the Congress, again, would be the body in charge of taking that decision if there's a need to take such a decision with the appropriate majority. Decisions are by secret ballot for such a decision. As I said, well, the specified majority, usually it's a 3/4 majority, which is prevalent in most associations. The dismissal motions must be justified and circulated with the agenda, so there's a need to communicate why the person, why the decision will be taken. The member has the right to defend themselves. This is important. Also, you need to give the person the opportunity to explain himself or herself in front of the Congress before the decision is taken, and dismissed members are relieved of their functions immediately. This again, that it's a provision that might come into play from time to time. This is quite rare. If we look at other associations, you know, at FC, FIFA, but it needs to be contained in your constitution because it might happen at some point. ये वाली थोड़ी सी गौर तलब बात है कि एक मेंबर है आपका, उसको कांग्रेस किस तरीके से डिसमिस कर सकती है। डिसमिसल का इख्तियार है, मगर उसकी कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए कि अगर हम किसी को डिसमिस कर रहे हैं तो उसकी कोई वजूहात होगी। ऐसे नहीं है कि वो हमें पसंद नहीं है, कोई बात है और हम ये मोशन मूव कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। नहीं,
ऐसे नहीं हो सकता। और इसके लिए 3/4 ऑफ क्वार्टरली जो मेजॉरिटी है वो प्रपोज की जाएगी। और जिस बंदे को आप डिसमिस कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप कल को मीटिंग कॉल कर देंगे जी हम आपको डिसमिस करें, नहीं, उसको पूरा राइट टू डिफेंड भी दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है कि हम इसको डिसमिस करें तो ठीक है, ठीक कर रहे हैं, या बस वैसे ही बस नहीं अच्छा लगता तो हम भेज रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले तो उस एजेंडा को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद सबसे जो मेजर है आपको 3/4 हो। और वो ये अगली बात ये कह रही हैं, ये मेंबर एसोसिएशन में होता नहीं है, मगर ये एक डेमोक्रेटिक जो भी आपके स्टैट्यूट होते हैं उसमें ये स्टैंडर्ड प्रोविजन होती है कि ये प्रोविजन होनी चाहिए इस तरह की, मगर ये एक्सरसाइज कहीं भी नहीं होती। Article 26. So next slide. The Congress, one more slide, yeah, to get to, well, the definition and composition of Congress. You need to know in the statutes who are the members, how can meetings take place. So you have the possibility nowadays to have meetings by video conference. This needs to be mentioned in your statutes. Congress can be ordinary, extraordinary. These are basic principles which some of them already contained in your current statutes, but they need to be detailed and defined further. Yeah. 27, delegates and votes, also an important article on. Sorry, yeah, sorry, I forgot to. I just assumed I could go to the next one. Yeah, go ahead. Sorry. ये आर्टिकल 26 है, डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस की कंपोजिशन किस तरह होगी ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमने पहले डिस्कस किया कि कांग्रेस की कंपोजिशन किस तरह होगी, उसमें मेंबर ऐड होंगे, वो तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, जैसे पहले बताया गया, जो कांग्रेस है वो आपकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव कानून साज बॉडी है। तीसरा पॉइंट है कि कांग्रेस, लेट्स से कल कांग्रेस कन्वीन होती है, ऐसे नहीं कन्वीन हो जाएगी, उसका पीछे प्रॉपर एक तरीका कार होगा। आया अगर वो सही तरीके से कॉल नहीं हुई तो उसके डिसीजन की कोई वैल्यू होगी, ये भी मद्देनजर रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि आज हम कह देंगे कल कांग्रेस बुला रहे हैं और उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो वो कांग्रेस मानी जाएगी। तीसरी बात इसमें है कि इस दफ़ा प्रपोज किया जा रहा है कि कांग्रेस आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हो सकती है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है आपकी उसमें वैलिड स्टेक होल्डर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके जो कवानीन है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंश्योर करते हो। कांग्रेस दो किस्म की भी होती है, एक तो होती है आम कांग्रेस जो मैंडेटरी होती है, साल में एक होनी है, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कांग्रेस, जैसे आपने 3-4 दफ़ा हमने की भी है कि एमरजेंट कांग्रेस उसको कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कांग्रेस इमरजेंसी में कॉल की जाती है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को प्रिजाइड करेगा, क्योंकि जो कांग्रेस को प्रिजाइड करने का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। तो विद द परमिशन ऑफ चेयर, वैसी मैं बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका जो कंडक्ट है, जो मेंटेन करने के सारे इख्तियारात होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं, वो उसका चेयर होगा। और कांग्रेस चाहे विद द अप्रूवल ऑफ चेयर आप ऑब्जर्वर भी बुला सकते हैं, मगर उनका कोई वोटिंग इख्तियार नहीं होगा उसके अंदर, और वो किसी वैलिड डिबेट का हिस्सा भी नहीं हो सकेंगे, बस वो आके बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बस ठीक है। 27 delegates and votes. So an article on composition of Congress. So who are the delegates, number of votes, how delegates are allocated to each member, minimum number of women for specific members. Delegates must belong to the member that they represent and be properly appointed or elected. That was already mentioned before. Each delegate has one vote. This is a basic principle. You know, one person should have one vote. We don't want one person to come and be entitled to 10 votes. that would not be in line with the FIFA and FC principles. Members of the EXCO and the General Secretary may attend but do not have voting rights. This is also important. What will also change in future is that if you're an EXCO member, you cannot be at the same time a Congress member. So you cannot have the two positions. We mentioned yesterday the separation of powers. If we allow this, that actually goes against the separation of power. In your new constitution, you would have a separation, total separation between the EXCO and the Congress. So you cannot have position in both bodies at the same time. आर्टिकल 27 इसमें ये बताया जाएगा,
आने वाले जो हमारे स्टैट्यूट्स होंगे डेलीगेट्स और वोट, सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि आपकी कांग्रेस की कॉम्पोजिशन क्या होगी और उससे रिलेटेड कवानीन होंगे जो आपके मेंबर है, जैसे एसोसिएशन है, उस उनके जो मेंबर्स जो फेडरेशन में हैं उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो ऑलरेडी प्रोवाइड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आप मेंबर है, ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात की हुई है उन्होंने कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाएगा, जैसे हमारे मेंबर्स हैं, एसोसिएशन है, वुमेन एसोसिएशन है, उसके कितने वोट होंगे उसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। और जैसे आपके सूबे हैं उनके कितने वोट्स होंगे इस मौजूदा जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। तीसरी बात उन्होंने की है कि जो डेलीगेट पीएफएफ की कांग्रेस में आएगा ना, उसका एक प्रॉपर वाज़ेह तरीक़ाकार दिया जाएगा, वो किस क्राइटेरिया के तहत, या तो वो इलेक्शन से आ रहा है पीएफएफ की कांग्रेस में या वो अपॉइंट होके आ रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो इसमें डिफाइन किया जाएगा। फिर उन्होंने बताया जो हर एक डेलीगेट होगा उसका एक वोट ही होगा, ये नहीं है कि वो दो दो तीन तीन वोट, ये वो वैसे भी अकल और फहम की बात है कि जो एक डेलीगेट है उसका एक वोट ही होता है। उसके बाद अगली बात है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और जो जनरल सेक्रेटरी है वो कांग्रेस की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं मगर उनका वोटिंग राइट नहीं होगा। अगर वो ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, मगर उनका कोई वोटिंग राइट नहीं। आखिरी जो सबसे मेन बात की गई है, जैसे कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ, मैं कांग्रेस का डेलीगेट नहीं हूँगा। क्यों नहीं हूँगा? एग्जीक्यूटिव कमेटी, उससे वही जो कल की बातें याद आ जाती हैं कि आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कांग्रेस के इख्तियार में नहीं बोल सकती, कांग्रेस एग्जीक्यूटिव, अगर आप दोनों पोजीशंस को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आप इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं अपने, जो आपके बेसिक इख्तियारात है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होगा वो कांग्रेस में नहीं आ सकता। ये इसमें एक मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट डाली जाएगी जो फीफा में भी है, जो एएफसी में भी है, जो ये एक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। Article 28, the area of authority. So a full list of the rights and the authority or powers that the Congress has will be listed in detail in the statutes. These are again quite similar to a certain degree to what you already have in your current constitution, but we'll be providing more detail in this regard. Yeah. ये वाला आर्टिकल 28 ऑलरेडी हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। इसमें बताया गया कांग्रेस के इख्तियारात क्या है, कानून साजी करना, पीएफएफ के आइन को अमेंड करना, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, इंडिपेंडेंट कमेटीज़ का फाइनल अप्रूवल देना, पीएफएफ के जो सालाना बजट है उसका अप्रूवल दे देना, उसके साथ मेंबर को जैसे पहले बताया गया सस्पेंड करने का, कांग्रेस में ऐड करने का तरीक़ाकार, और जैसे आपके जो एजाज़ी जो टाइटल्स हैं वो कांग्रेस दे सकता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स की फाइनलाइजेशन कर सकती है। ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। 29 on a quorum, an important also article in legal terms. What is the quorum? So what sort of majority do you need in such case? This is a kind of a description of the process. How do you establish the quorum to make valid decisions? In case you don't have the quorum, when should the next Congress be convened? So we're suggesting FIFA and AFC 24 hours of the following day. Certain decisions will need a quorum in any case. So revising your constitution, you would need a quorum, or electing your leadership, you would also need the quorum. Also disposition on our provision on departing delegates will not influence the quorum. This is important in case people decide to leave the room for any particular reason, and that ensures that decision making remains valid. So you have a clear process to ensure that your decisions are legally binding at the end of the day. ये भी एक जनरल प्रोविजन कोरम कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं, लेट्स से इस टाइम मौजूदा 14 है, तो उसकी जो फैसले लेने की जो कोरम होना चाहिए वो मोर देन 50% होना चाहिए। जैसे 13 होंगे तो डिसीजन वैलिड होगा। इसके बाद उन्होंने अगली बात की गई है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर को डिसमिस करना है, उसका भी एक कोरम प्रोवाइड किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उसका क्या कोरम होगा। इसी तरह उन्होंने आगे बताया हुआ कि एक दफ़ा जब कांग्रेस की मीटिंग कन्वीन हो जाती है और जो अगर मेंबर जाके छोड़ के जाना चाह रहा होता है मीटिंग, उससे फिर कोरम अफेक्ट नहीं होता। लेट से 13 बंदे पूरे हो गए, एक दो चले भी जाते फिर पीछे डिसीजंस होंगे। मगर एक चीज़ वो भी इंश्योर करनी है, जो डिसीजंस है वो वैलिड और ऑर्डरली होने चाहिए। ये नहीं है कि डिसीजंस ही गलत ले लिए जाए, ये भी होगा। Next slide. Decisions. This will deal with decisions. So how do you take decisions? A show of hands, electronically,
For most decisions, and this is the case in all our member station, a simple majority of 50% of the vote is valid. Also specification of what do you do with invalid votes, blank vote, and so on. So these are important provisions to ensure we understand the process. Whenever a decision is taken by the Congress, they are clear. There's a clear process defined in your constitution. कांग्रेस के डिसीजन का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, किस तरह कर सकते हैं डिसीजन? बाय शो ऑफ हैंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बायोमेट्रिक जो भी तरीक़ाकार है उसके थ्रू कर सकते हैं. उसके बाद आपने ये भी देखना है कि किन डिसीजंस के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, मोर देन 50%, उस पर डिसीजन हो सकता है. उसके बाद अब ये एक पॉइंट है, लेट से हम 24 मेंबर हैं, अगर किसी बैलेट से 25 वोट निकल आते हैं तो वैलिड फारक, या वैलिड के ऊपर प्रॉपरली मार्क स्टैम्प जो तरीक़ाकार प्रोवाइडेड है वो नहीं लगा हुआ, तो उससे वैलिड ख़त्म हो जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा. और जितने भी आपके फैसले जैसे पहले कहा क्लियर होने चाहिए, और जो आपके पार्टिसिपेशंस हैं उनकी वहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और क्लियर डिसीजंस लिए जाएं. Article 31, elections, you will also have a specific provision on elections that is much more detailed to what you currently have. What FIFA and FC are now proposing is elections by list. We have, this is also based on other experience we've had with member stations. Usually elections by list are more straightforward, provide for more stability for member stations. So you will have elections by list. We'll be defining a bit more in the other slides what we mean by election by list compared to elections by position, which you currently have. You need also to go through secret ballots, so this will not change. Elections will be through secret ballots to ensure transparency and anonymity in the vote. And they will be supervised by the Electoral Committee, so there will be a dedicated committee which would be appointed by the Congress, and the whole process will be guided by specific regulations. So it's also something that we want all our member stations to implement. It's a separate set of regulations for elections that will dictate the process, not only on the day of the elections, but before the elections, the receiving the candidature, analyzing the candidature, and publishing the final list of candidates. So this will be regulated through the statutes and the electoral code. ये आर्टिकल 31 जो प्रपोज किया जा रहा है वो हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इसमें बता रहे हैं कि जो PFF के इलेक्शंस का इनकाद होगा किस तरीके से कराए जाएंगे वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, और वो दूसरी बात करेंगे सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होगा ताकि वोटर की एनोनिमिटी रहे कि किसी को पता ना हो कि किसने किसको वोट डाला है. तीसरी बात वो प्रपोज करें कि जो PFF का इलेक्शन है, जैसे आपने पैनल इलेक्शन का नाम सुना है, तो इलेक्शन बाय लिस्ट उसको कहा जाता है, उस तर्ज़-ए-कार का इलेक्शन होगा जिसका एक क्राइटेरिया वो अभी आगे जाके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, वो किस तरीके से होगा, उसका प्रपोजल किस तरह से आएगा. और जितने भी आपके इलेक्शन है ना, वो एक होगी आपकी इलेक्टोरल कमेटी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसके रूल ड्राफ्ट करेगी और वो उसको सुपरवाइज करेगी. एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी जो इन सारे मामलात को देखेगी. Article 32, sorry, we're still in election by list. We have a separate slide just for you to better grasp what it means in future with a new system. So candidates are grouped into lists supported by a minimum number of members. Each member can only support one list, so you cannot support list A and B. A list needs a majority to be elected. So usually, I mean, you might have two or more lists, but usually the process is such that if you have more than two lists, you would go through a first round, and then you eliminate or only keep the last list at the end, the last two lists at the end that got the better result, and then you go for majority votes to, let's say, to declare the winner or the list that won the elections. ठीक है. अच्छा, इसमें जो है कैंडिडेट जो हैं वो लिस्ट में ग्रुप होंगे, जैसे एक पैनल होता है, और जो है वो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट करना है. इसी तरह जो है हर मेंबर जो है वो एक लिस्ट को सपोर्ट कर सकता है. इन केस इलेक्शन के लिए एक लिस्ट को मेजॉरिटी चाहिए होगी विच इज़ ग्रेटर देन 50%, और अगर बहुत सारी लिस्ट हैं, मतलब अगर 4 पैनल्स हैं, तो उसमें ये होगा कि राउंड बाय राउंड इलेक्शन होगा, जिसमें हर राउंड में जिस लिस्ट को सबसे कम वोट्स मिले वो एलिमिनेट हो जाएगी.
And as I was saying before, the system of the election by list usually produces a better outcome after the elections, in the sense that you would have a stronger leadership. That's what we see also in other member stations, because you are part of one list or with the same objectives. You follow the head of the list and have the same objectives going forward. You don't have different opinions on the implementation of the strategy. So it would look like this. You might have 1 or 2 or 3 or 4 lists. So somebody comes up with a list of candidates, list A, list B, list C. You would have then to decide, you Congress member, which list you think is the most worthy to become part of your leadership and lead PFF. Yeah. So that's the system we are advocating, FIFA and AFC. This is also, again, based on past experience. We see that this is a better system than election by position. It works better, and there's a better outcome at the end of the day for our member associations out of these elections. फीफा और एएफसी ने ये देखा है कि जब आप इलेक्शन बाय लिस्ट कराते हैं, उससे चीज़ें और फेडरेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर एक लिस्ट पूरी इलेक्ट होती है तो उनमें लोगों का जो गोल्स हैं या स्ट्रैटेजी है वो एक चीज़ पे अलाइंड होती है. तो बेसिकली अब जो है वो हम लिस्ट की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं कि ये हमारे लिए आगे जाके एक स्टेबल फेडरेशन की तरफ जाए. So Article 31 on elections, this also provide more information on how elections would be held, not only for your executive committee but also for other committees. As I was saying before, the Congress will also be in charge of electing other bodies, so the independent committees made of several different committees. So we have to define also not only the process for the executive committee elections but also for other elections, in particular the independent bodies. इसमें बताया जाए जैसे आपके इंडिपेंडेंट कमेटीज़ हैं, उनका इलेक्शन भी कंडक्ट किया जा सकता है. अगर हम इंडिविजुअली चाहते हैं कि हमें ए पसंद है, बी पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है उस तरह, और हम उसको एन ब्लॉक के तरीके से भी कर सकते हैं कि एज अ होल भी हम कह सकते हैं भाई ना ये 4 मेंबर्स हैं, ये 4 ठीक हैं. तो इसके ऊपर भी इस पर बात की जाएगी, इस पर भी डिस्कशंस हो सकती हैं. अभी वो जब आगे प्रोवाइड होगा उस पर पता चलेगा. Article 32. Now we get to the ordinary Congress. So held annually, there should be at least one Congress per year. The EXCO is responsible for setting the date and place. That's not changed. Members are notified in advance, so you have a clear time frame when you are supposed to be notified of the place and date, but also when you should receive the documents. So if you were to approve statutes, you receive the documents in advance. You can submit proposals also as Congress members before the Congress. Obviously, you have to comply with the time frame for these proposals to be taken into account. And then you have other requirements that are linked with the ordinary Congress that needs to be found in that particular article there. अच्छा, ऑर्डिनरी कांग्रेस जो है वो हर साल एक दफ़ा होगी. उसमें जो है वो एक्सको की ज़िम्मेदारी होगी कि वो डेट और टाइम उसका सेट करे. मेंबर्स को जो है वो कांग्रेस के मेंबर्स को पहले से बताया जाएगा कि इस डेट पे कांग्रेस है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें अप्रूवल के लिए जाएगा तो उनको पहले से भेज दिया जाएगा. इसी तरह मेंबर्स जो हैं कांग्रेस के वो भी अपने प्रपोजल्स टेबल कर सकते हैं, लेकिन वो भी विद इन एक टाइम फ्रेम में उन्होंने करना है कांग्रेस से पहले. इसी तरह जो है वो उसमें जो है हर चीज़ की जो है शेड्यूल और उसकी नोटिफिकेशन और फिर डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल्स की जो है ना उनकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होगी. Article 33. The agenda, Congress agenda, you also need to know exactly what would be the points to be dealt with by the Congress during an ordinary Congress. So you need to have a list of the exact points, which is pretty standard in most of our member associations. We have the same list with the same items, but you need to make sure you deal with all of them. No decisions can be made on items not on the agenda, so this is important. You cannot, on the spot propose another
item, there is a process defined. So if you have any, as Congress member, you want to propose a particular item, you have to do it within a particular time frame. You have to follow the due process to make sure that it can end up on the agenda. Agenda can be altered. Yes, that's the exception, but you need to have a majority of the delegates in order to change the agenda if there's a particular need to change the order or the content of the agenda. ये ऑर्डिनरी कांग्रेस के एजेंडा की बात हो रही है जो सालाना एक आम कांग्रेस होती है। इसमें बताया गया हुआ है कि जो आपका कांग्रेस का जो एजेंडा है वो जनरल सेक्रेटरी और जो मेंबर्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जनरल सेक्रेटरी को बताया जाता है कि ये एजेंडा पॉइंट्स है, इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद उसमें कुछ मैंडेटरी आइटम्स होती हैं जो आपके आइन में प्रोवाइडेड होगी कि ये एजेंडा होगा। जैसे उसमें के अप्रूवल ऑफ एजेंडा, जैसे जब भी एजेंडा शुरू होना होता है आप सबसे पहले अप्रूवल लिया जाएगा, आप इस एजेंडे को अप्रूव करते हैं, आप कहेंगे हम अप्रूव करते हैं। उसमें प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा क्योंकि वो चेयर होता है उसका। उसके साथ जो उसके मिनट्स की फाइनलाइजेशन के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट बैठ के उसके स्क्रूटनी के लिए बंदे अपॉइंट कर सकता है उसके अंडर से। तो ये एक स्टैंडर्ड जेनेरिक प्रोसेस प्रोवाइडेड है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें एक और बात है कि उस फैसले के ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता जो एजेंडा में है ही नहीं। Article 34, extraordinary Congress. You also need a provision to define how extraordinary Congress can be convened. There might be situations where you have to convene an extraordinary Congress for a particular matter. So you have, well, the provision defines that the EXCO would convene such a Congress. So there's a particular timeline also to be defined. You also have the possibility as Congress member to convene the Congress yourself with a particular majority in case the EXCO for a particular reason doesn't convene it itself. So this is defined in detail in this particular provision. Members must be informed in advance. This is logical. If there's an ordinary extraordinary Congress, you need to receive also the information why that ordinary Congress, extraordinary Congress is convened. The agenda also needs to be prepared based on certain provision. And then an important element that an extraordinary Congress cannot be amended. So contrary to an ordinary Congress that can be amended, the extraordinary Congress is for one particular item, and that this particular item cannot be altered or changed. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस जो इमरजेंसी कांग्रेस जो हम कॉल करते हैं उसका तरीक़ाकार है। ये अभी हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रोवाइडेड है। इसमें उन्होंने बताया है कि एग्जेक्टिव कमेटी मीटिंग करके अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस कन्वीन कर सकती है पीएफएफ की। इसी तरह आप कुछ मेंबर्स हैं, आपके पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस मीटिंग जो प्रोवाइडेड है, एक कोरम पूरा होने के बाद आप रिक्वेस्ट डाल के कन्वीन कर सकते हैं। ये मौजूदा आर्टिकल है। उसके अंदर आपने एक्सप्रेसली वो पॉइंट्स डालने हैं जिसकी आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, और एक टाइम फ्रेम बता दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर ये मीटिंग कन्वीन हो सकती है। उसका तरीका कार बताया जाएगा। अगर आप मेंबर्स लिखते हैं कि एग्जेक्टिव कमेटी को या आप कांग्रेस कन्वीन करें, वो नहीं करती, तो एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आपके इख्तियारात के तहत उसको कैसे आप कांग्रेस मेंबर भी उसको कन्वीन कर सकते हैं। वो इख्तियारात बताए जाएंगे कि आप कैसे, अगर एग्जेक्टिव आपकी बात नहीं मान रही तो आप कैसे कन्वीन कर सकते हैं, उसको भी डिफ़ाइन किया जाएगा। और एक दफ़ा कोई जो आपने एजेंडा रख दिया कोई भी, तो वो फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्पस के लिए आती है। उसका एजेंडा जो होता है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। जो एक दफ़ा आ गया वो आ गया। Article 35. This article deals with the process for the amendment of the statutes. You need to know what are the requirements to amend your statutes or constitution, as you call it. A minimum number of members that must support an amendment to the statutes. Also the particular majority. Usually majority is higher for change of constitution because it's such an important document. And also the obligation to communicate to FIFA and AFC the changes. This is important for us because we follow, and especially in the case of PFF, we'll be following very closely the process. But this also applies to other associations. Whenever changes are made, are going to be made, we ask those associations to inform us in advance, FIFA and AFC, so that we can also support or validate also the changes. In case we feel that they are not in line with our principles, we would have to intervene.
जैसे कि कल और ओपनिंग सेशन में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो कवानीन है पीएफएफ के, आइन, इलेक्टोरल रूल्स वगैरह, वो कांग्रेस उसको अमेंड कर सकती है। उसका एक तरीका कार है, उसमें एक कोरम मीट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने स्टार्ट में फीफा अभी हमें एक्सप्लेन किया गया कि जैसे फीफा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रही है, वो आपके ऊपर एकदम ये नहीं कह रही कि आप अभी इसको करें, नहीं, वो अभी आपसे प्रपोजल भी लेगी, जैसे आप अपने पॉइंट्स भी देंगे वो उसको कंसिडर करेंगे। अगर वो वैलिड होंगे तो वो अमेंडमेंट को आगे उसमें कंसिडर करेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर जैसे कोई मैंडेटरी पॉइंट है, लाजिम पॉइंट है, अगर आप उसको उसकी स्क्रूटनी वो करेंगे एंड पे जाके। तो जो भी आप प्रपोजल दे रहे हैं आप उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि जी इस आइन में तरमीम इस वजह से होनी चाहिए, और वो तरमीम कुछ कैंडिडेट्स उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे जा सकेगी, तो वरना वो वैलिड नहीं होगी। And you will see also, as part of the Congress authorities, also to amend the electoral code. This is also a standard at FIFA. We deem that the document is so important because it regulates elections that it must be the Congress, the PFF Congress deciding on the document. So not only the statutes, but we have the standing orders of the Congress, which are also regulates how sessions are organized, or how items are being dealt with. But also the electoral code, this should be put to a vote to the PFF Congress for adoption or revision. इसमें बताया जाए जैसे आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, एक रेगुलेशन होती है कांग्रेस को किस तरह कन्वीन करना है, किस तरह चलाना है, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी कांग्रेस बना सकती है कि इस अंदाज से आप कांग्रेस को कन्वीन करें, ये भी बन सकते हैं। इसी तरह आपका इलेक्टोरल कोड है जिस पे आपका इलेक्शन होना है, वो भी कांग्रेस के पास आएगा, कांग्रेस उसको भी देख के रेटिफाई कर सकती है। Article 36, we are reaching the end of the part on Congress. Maybe I would suggest to have a break after Article, I think, 38. So we are halfway through. We can have maybe a 10 minutes break and then continue. So minutes, also an important article dealing with the minutes. So the General Secretary is responsible for keeping the official minutes of the Congress. This is an important legal document that needs to be produced and then shared with or checked by the members that were designated, and then formally approved at the following Congress. So whenever Congress takes place, you have the minutes. Usually it is circulated to the members checking the content, and then you have to confirm the content of those minutes at the next Congress. This is a standard process also that applies at the level of FIFA and AFC. अच्छा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है कांग्रेस की मीटिंग के मिनट्स नोट डाउन करेंगे, और ये जो मिनट्स जो वो लेंगे वो फिर सबसे पहले जो है वो मेंबर्स जो जिनका वो जिनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसको चेक करेंगे, और फिर अगली कांग्रेस मीटिंग पे वो अप्रूव होंगे बाय द कांग्रेस। Article 37, date of decisions. Also, when would decision come into force? You have to establish it in your constitution. So generally it takes effect immediately. So once the Congress has taken the decision, it applies immediately, unless there is a different date, or unless the Congress decides otherwise, or unless it's there's a specific provision in your statutes. This is more for legal reasons to understand when certain decisions come into force. Because they have legal weight and are important decisions taken by the Supreme Body. अच्छा, जो भी डिसीजंस कांग्रेस लेगी वो इमीडिएटली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और जैसे ही कांग्रेस ख़त्म होगी। वरना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी डिफरेंट डेट पे लेनी है तो वो भी स्टैट्यूट जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे कि ऐसा कोई डिसीजन हम बाद में क्यों ले रहे हैं। इसी तरह जो है ये इसको जो है हमने डिसीजंस हम फ़ौरन इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है एक्शन और जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें ज़्यादा टाइम ना लगे और आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। Yeah, so I think next article is on, if I'm not mistaken, executive committee. So let's have a break of 10 minutes, and then we carry on with the rest of the statutes.
So should we start again? Yeah, we have another 40 articles, but it should be quite fast. We have an important part on executive committee, but then it should go quite fast. So hopefully, what time is it now, Ali? Okay, all right. Yeah, maybe another hour or so. Yeah, I think we should be able. And then we have also time to open the floor for questions after that second part of the presentation. Yeah. Okay, yeah, right. So Article 38, composition of the Executive Committee. So terms of the Executive Committee, you will have also term limits and how number of terms that you can be president or exco members. So you have not always the same people in those positions. The article will also define the requirements that you have to fulfill in order to be part of the executive committee. Vacancies, you know, what happens if somebody is no longer a member or decides to resign. There will also be in Article 38 the composition. So it's not on the screen, but it will be a standard composition with president, vice president, and a specific number of members. What we will have in your constitution, however, is a minimum number of women. We said yesterday that it's important, crucial to include women at all level of PFF, so that will also count for the executive committee. You will have a minimum number of women present in the EXCO. ये आर्टिकल 38 होगा जिसमें एग्जेक्टिव कमेटी की कंपोजिशन के बारे में बताया जाएगा, किस तरह की कंपोजिशन होगी। उसमें उनकी टर्म लिमिट 4 साल डिफाइन की जाएगी और उसी तरह बताया जाएगा कि एग्जेक्टिव की पोजीशंस कौन सी होगी, जैसे सदर, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ एग्जेक्टिव मेंबर, उसमें वुमेन को भी लीडरशिप पोजीशन देना, जैसे कल बता रहे थे कि एक रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जैसे एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर है, रिजाइन करता है, तो फिर उसका अगला तरीका क्या होगा और रेजिग्नेशन के बाद उस सीट को दोबारा फिल कैसे करना है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। इनकेस किसी की डेथ हो जाती है, कोई डिसेबल हो जाता है या कोई किसी वजह रिजाइन कर जाता है, तो उसकी पोजीशन को कैसे फिल किया जाएगा, वो उसमें बताया जाएगा। Article 39 on meetings of the executive committee. So this would regulate how meetings are to be conducted, possibility to have video conference meeting, so online meeting. The president would be calling the meeting, convening the meetings. The agenda also is prepared by the president in support with support from the general secretary. Members can also propose items on the agenda. You also have the possibility for the president to call urgent meetings. This is important because the deadlines for ordinary meetings might not be appropriate in case of an urgent matter. So there you need a mechanism allowing the president to convene those meetings at short deadline to deal with very urgent matters or decisions that need to be taken. इसमें बताया जाए कि ये भी प्रपोज किया जाएगा कि एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग किस तरह होगी। आइदर वो इन पर्सन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह भी हो सकती है, और ये रेगुलरली हो तो अच्छा होता है। मगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है इसमें प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, हमने अब जल्दी एक कुछ अर्जेंट फैसले मीटिंग कॉल करनी है, तो उसकी कोई टाइमलाइन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे एक रेगुलर टाइमलाइन होती है, लेट से 30 दिन 15 दिन, मगर अगर प्रेसिडेंट अर्जेंसी में कॉल करना चाहता है तो उसकी भी टाइमलाइन उसमें प्रोवाइड की जाएगी। और फिर अगली बात है जो उसका एजेंडा है, एजेंडा प्रेसिडेंट प्रिपेयर करेगा विद द सपोर्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, और अगर कोई मेंबर्स हैं तो वो प्रपोज कर सकते हैं कि आप ये वाले एजेंडा आइटम्स भी डाल दें। Article 40, this is about the powers of the executive committee. So what can the EXCO do, what it cannot do. It covers quite a few important areas which you already have to some extent in your current constitution. But again, there we will add more detail or better explanations of what the actual powers of the EXCO is. So you will get a full list in due course when you see the draft. But here we've put some of the most important powers and responsibilities of the EXCO. आर्टिकल 40 में इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि एग्जेक्टिव कमेटी किन किन चीज़ों में फैसला ले सकती है। जैसे कि कांग्रेस का इख्तियार है आया और एग्जेक्टिव कमेटी उस इख्तियार में इंटरवीन नहीं करेगी जो कांग्रेस का है, और उसमें बताया जाएगा कि अगर
जनरल सेक्रेटरी के सेक्रेटेरिएट के साथ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस कॉल करती है एग्जेक्टिव कमेटी तो किस तरीके से करेगी, और इसमें बताया जाएगा एग्जेक्टिव इंटरनल रेगुलेशंस भी जैसे हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इंटरनली कुछ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो भी बताया जाएगा कि एग्जेक्टिव किस लेवल की अपॉइंटमेंट्स कर सकती है। Article 41, decisions. This regulates how decisions are taken by the EXCO. So quorum, majority, how votes are taken, the sort of also documentation that needs to be sent to the executive committee members prior to meetings, deadline and so forth. This will be also listed in quite detail so that meetings can be organized in a properly way. With clarity for everyone. एग्जेक्टिव कमेटी के डिसीजन लेने का तरीकाकार कैसा होगा? जैसे कांग्रेस है, मोर देन 50% कोरम होगा तो फैसला लिया जाएगा, यही हमारे एग्जेक्टिव कमेटी में मौजूदा पोजीशन भी ऐसी है, अगर 13 में से 7 लेते हैं वो फैसला वैलिडेट कर जाता है। तो इसमें बताया जाएगा कुछ जैसे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बात आती है तो मेंबर उससे विड्रॉ कर लेगा, वो उस डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनेगा जिसमें उसको बेनिफिट हो रहा होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड और जनरल प्रोविजन है जो मौजूदा भी अभी भी प्रोवाइडेड है। Article 42, this is the section on the president. The next slide, please. Yeah, 42. Again, important to mention what are the powers of the president. So here you also have a provision that will define this in detail. For instance, the appointment of general secretary. So he's the one appointing and also provide. While proposing the appointment or the dismissal of the General Secretary to the EXCO. This is an important power. Voting rights, the President has also an ordinary vote, so he's not, in terms of vote, more important than any other EXCO members. However, he would have a casting vote in the case you have a tie in a decision. In case a vote needs to be taken, the President has a casting vote. You see here all the different responsibilities of the president, ensuring that the objectives of the federation are complied with, the mission. So the objectives that we had in Article 2, the president is responsible for making sure those objectives are implemented, fostering a positive image for PFF, the relationship also with the external stakeholders, FIFA, AFC, and so on, and political bodies and so forth. इसके अंदर प्रेसिडेंट के इख्तियारात के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, जैसे एग्जेक्टिव और कांग्रेस मीटिंग्स को चेयर करना, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो रिलेशंस हैं हमारी सरकार के साथ, AFC, फीफा में जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इमेज को पॉजिटिवली प्रमोट करना, जो माशाल्लाह हो रहा है। और इसी तरह के जो फेडरेशन की जो फंक्शनिंग है उसको सेक्रेटेरिएट को सुपरवाइज करना, ये उसके इख्तियारात है। और इसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि PFF की इंटरनल रेगुलेशंस है प्रेसिडेंट के, उसके अंदर भी इख्तियारात प्रोवाइड किए जाएंगे जो एक अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। और एक और बात, जो एक प्रेसिडेंट का एग्जेक्टिव कमेटी में एक वोट होता है, अगर वोट टाई हो जाए तो उसका एक एडिशनल वोट भी होता है, ये मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है। Also, if we keep Article 42, important to mention this, because this is also, sometimes it leads to misunderstanding within member station. This is also the president's role to supervise the general secretariat, so that's why the president needs to be able to work with somebody that actually he can rely upon, but he also has the role to supervise the work of the GS and the general secretary as part of his duties. So Article 43, representation and signature. This deals with signature powers. So you need also to establish in your constitution which official should sign which documents. So be it maybe official documents, contracts, any legal documents you would need to define in detail. Whether you have one signature, whether you have two signatures, it can be the president and the GS, or president and EXCO member, and so forth. But this needs to be defined in your statutes and regulations. रिप्रेजेंटेशन और सिग्नेचर से मुतल्लिक है, जैसे कि सबको पता है जो प्रेसिडेंट है वो हेड है फेडरेशन का, तो जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है वो साइनिंग अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट की होती है। इंटरनल रेगुलेशंस PFF की इस तरह भी बनाई जा सकती है, अगर प्रेसिडेंट समझे कि यार मेरे से एक एडिशनल साइन करने वाला भी हो तो वो जनरल सेक्रेटरी हो सकता है जिसको इंटरनल रेगुलेशंस में स्पेसिफाई कर दिया जाए। 44, this is the section on the general secretariat. So 44 dealing with the administration, or we call it sometimes administration instead of general secretariat.
under the supervision of the PFF president. The head of the General Secretariat is a General Secretary who serves as the operational and administrative body of PFF. It's members, so members of staff, and this is important, they have to comply with certain requirements also for their appointment. We're talking here, and this goes in the way FIFA would like to professionalize member associations. You need to have robust process to recruit people within the administration. Yeah, so you need the best people to manage your federation. It should also be the case for PFF. So you need to define processes for recruitment. You need to find the people that have the right skills and qualities to fill the different positions within the administration. So जो जनरल सेक्रेटरी है वो बेसिकली पीएफएफ की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी सरबराही में होगी, और इसी तरह जो है पीएफएफ का जो स्टाफ है उसको जो कंप्लाई करना है वो पीएफएफ की जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और रेगुलेशंस हैं उसके साथ कंप्लाई करना है। फीफा की ये कोशिश है कि जितनी फेडरेशन हैं वो प्रोफेशनलाइज हो जाएं, और एक बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्टाफ रिक्रूट कर सकें ताकि फेडरेशन के फंक्शंस जो हैं वो अच्छी तरह चल सकें। और जो स्टाफ की हायरिंग है जनरल सेक्रेटेरिएट में, वो जनरल सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है, और जो उसकी हायरिंग की अथॉरिटीज़ है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, वो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है। Article 45, this is on the General Secretary himself or herself. Is the Chief Executive Officer of PFF, appointed by the EXCO upon the President's proposal, based on the private law agreement and so forth. So it defines also the kind of experience you would need to have to qualify as a General Secretary. We usually advise our member stations to have also internal organization regulations, because obviously we cannot put every single detail of every single processes in the statutes. You would end up with a document that has probably 200 pages. If you want to go more into detail, what FIFA and FC advise is to have internal organization regulations, as we call them, defining certain aspects of processes that you would not be able to put in the statute. So that's something also that PFF will have to work on. The starting point is obviously the statutes, because it contains the main elements, main obligations, and then you can work on some detail that is important also, but at the level, you would put them at the level of the regulations. इसमें बताया गया कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। तो मगर जो उसके अपॉइंटमेंट का तरीका कार है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रपोजल के थ्रू लगेगा, और उसका जो डिसमिसल भी है वो भी थ्रू प्रेसिडेंट होगा। और इसमें आगे बताया गया है कि प्राइवेट लॉ, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का होगा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं एक पीएफएफ का एम्प्लॉई हूँ तो मेरा पाकिस्तान के कवानीन है उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुंसलिक है। तो आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो जनरल सेक्रेटरी है उससे एग्जीक्यूटिव कांग्रेस के जो फैसले हैं उसको एग्जीक्यूट कराना होता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और उसके बाद, और वो ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रोल्स एंड ड्यूटीज़ नहीं लिख सकते, उसकी अलग से डॉक्यूमेंट रेगुलेशन बनती है जिस पे उसकी एडिशनल पावर्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। Article 46, so we now tackle the standing committees. So standing committees are important because these are committees that should be composed of professionals, people that actually have a particular background and an experience. Those committees will be formed or created within PFF to provide the necessary advice and guidance to not only the executive committee but also to the general secretariat to take the right decisions. So here we are really talking about bodies of professionals, experts in their field that would be providing advice. They don't take decisions, binding decisions, but they provide advice so that the EXCO and the General Secretariat is in a better position to take decisions. So जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनमें अपनी जो हर कमेटी के जो लोग जो उसमें होंगे वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते होंगे, यानी प्रोफेशनल्स होंगे जो इन कमिटीज़ में होंगे, और वो जो हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते,
लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी को एडवाइस कर सकते हैं कि इन मतलब इन एरियाज़ में हमें किन चीज़ों में इम्प्रूव करना है और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उसमें यह है कि फ़ीमेल्स विमेंस की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो हमें चाहिए, और जो स्टैंडिंग कमिटीज़ की मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकती हैं। अदर पॉइंट एक और बात लिखी हुई है, इसमें कैटेगराइज कर दी गई है पॉइंट 2 के नीचे कि जो मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव के हो सकते हैं, मगर एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई है, जो चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है फाइनेंस और रेफरी कमेटीज़ के, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स है वो नहीं हो सकते, फाइनेंस कमेटी के और रेफरीज कमेटी के। Yes, yeah, correct. I forgot this, which is important. So the finance and referee committee, you would need to have people with the expertise. They cannot be at the same time member of the EXCO. It is to also to create a certain separation between the two. Finance is such an important aspect of a federation. We should have financial experts, you know, former auditors or current auditors that should populate that committee. It's more difficult to find financial experts in the EXCO, so we thought it would be important to make sure that we have there only experts that would be part of these two particular committees. Yeah. फाइनेंस और रेफरीज कमिटीज़ जो हैं उनमें एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए फाइनेंस कमेटी में, और इसी तरह रेफरीज कमेटी के लिए भी जो लोग रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो होंगे। Yeah, next slide shows the, well, that would be Article 47 to 54, the 7 standing committees that PFF would have. So starting with the Finance Committee, the Competitions Committee, the Technical and Development Committee, the Referees Committee, which is, as we said yesterday, a mandatory under the FIFA regulations, the Women's Football Committee, the Play Status Committee, also requested by FIFA regulations, the Amateur and Grassroots Committee, and finally we also have the possibility to have ad hoc committees. So there's an article on how to create ad hoc committees. Yeah. ये तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हम अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। Okay, so let's move on to the next article or next section, the club licensing bodies. So the bodies that would be overseeing the club licensing system within PFF. PFF will need to have regulations on this. If it's not the case, then we'll have to implement club licensing regulations that need to be in line with the AFC regulations. You have also two different instances, first instance, second instance. This is regulated at the level of the confederation, but these are standards that usually are not problematic. क्लब लाइसेंसिंग बॉडी से मुराद है, जैसे आप सबको पता है क्लब लाइसेंसिंग क्या है। क्लब लाइसेंसिंग देखते हैं अगर क्लब एक रिक्विजिट क्राइटेरिया मीट करता है तो वो वैलिड है क्लब, तो उसकी एक बॉडीज दे दी। लेट से एक क्लब है, किसी रीजन की वजह से उसकी रिजेक्शन हो जाती है, आप पीएफएफ की एफिलिएशन में नहीं आते, आप कोई क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे होते, उनके लिए अलग से एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। उसकी दो बॉडीज़ है, एक फर्स्ट इंस्टेंस बॉडी है कि अगर किसी क्लब को फेडरेशन ने कहा कि नहीं क्लब लाइसेंसिंग बॉडी ने आप वैलिड नहीं हो, तो वो पहले एक टीयर के पास जाएगा, जी मेरा केस देखे क्यों मुझे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद एक अपील का हक भी होगा उसी क्लब लाइसेंसिंग बॉडी के अंदर। तो इस चीज़ को और एक इंडिपेंडेंट और उनके फैसले इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के आगे भी चैलेंज हो सकते हैं। Yeah, and this independent tribunal is in fact CAS, we didn't mention it here, but in the PFF statutes we would have first instance, second instance within PFF, and then appeals would go to CAS directly. Yeah. जो हद में जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, फैसले जो चैलेंज होंगे वो CAS होगी। Okay, next slide. The independent committees. So this is an introduction to what we mean by independent committees, what are the requirements that we would want members of those committees to comply with, also the composition, how many members you would have. An important aspect which was already mentioned before is the fact that the Congress members would elect those members, so they have to be proposed through the administration to the EXCO, and then final decision taken by the Congress. Integrity checks will also be carried out on the members of these independent committees to ensure the appropriate that they comply with the appropriate requirements. You also have term limits that will be mentioned under this particular provision. Yeah.
इसमें बताया जा रहा है आपकी जो इंडिपेंडेंट कमेटीज़ है, जैसे आपकी इलेक्टोरल कमेटीज़ है, आपकी जुडिशल बॉडीज़ है, जैसे कल बताया जा रहा था कि जो उसमें अपॉइंटमेंट्स होगी पहले जनरल सेक्रेटेरिएट से होते हुए एग्जेक्टिव के पास जाएगी, एग्जेक्टिव से होकर कांग्रेस में आएगी, फाइनल अथॉरिटी कांग्रेस के पास होगी उनको इलेक्ट करने की। जनरल सेक्रेटेरिएट से उनका प्रोसेस शुरू होगा, उनकी एलिजिबिलिटी इंटेग्रिटी चेक करके एग्जेक्टिव को प्रपोज की जाएगी, वो आगे फॉर फाइनल वैलिडेशन कांग्रेस को भेजेगी। It's also important to mention here that the members of those committees will have to ensure they have not held or do not hold any business relationship with PFF or its members or anyone at the federation. This is to guarantee that we have independent members that compose those committees. We want people to be able to look at the matter at hand in total independence, where there's no conflict of interest possible or no undue relationship with anyone at the federation. जितनी भी आपकी इंडिपेंडेंट कमेटीज़ है, जैसे इलेक्टोरल कमेटी है, जुडिशल बॉडीज़ है, उनके जो मेंबर्स जितने भी होंगे, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ना वो पीएफएफ एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, ना वो कांग्रेस से होंगे, ना वो एक्सको से होंगे, वो प्योरली इंडिपेंडेंट लोग होंगे जो एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते होंगे जो इंटरनल रेगुलेशंस में अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। 57. This is an article on the Audit and Compliance Committee. This is a new committee that you will have under your constitution, which also regulates the number of members, the requirements they have to fulfill, and so on. It's pretty standard. That's also what we want all our member stations to implement nowadays. It's a committee that will also check whether other bodies within PFF comply with their own regulations. So you will have like a number of independent members that will look also at the EXCO, at the Congress, at the General Secretariat. Are they respecting their own internal regulations and guidelines? Yeah. एक नई कमेटी बन रही है जो ऑडिट एंड कंप्लायंस कमेटी है। ये भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, डेप्यूटी चेयर होगा और इसमें मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो लोग होंगे उनको फाइनेंशियल, रेगुलेटरी और लीगल चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हासिल होना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि वो पीएफएफ के ऑपरेशंस के जो चीज़ें हैं उनमें ये इनका काम ना हो। और ये जो है ये बेसिकली सबको ओवरसी कर रहे होंगे कि हर जगह पर कंप्लायंस फॉलो हो रही है, सेक्रेटेरिएट से लेके एक्सको एंड कांग्रेस। Next slide, 58. An article on the electoral committee, we mentioned it before, so you will have also a new electoral code. This article will regulate the composition of those bodies, also the appeal mechanism. Usually, or you might have a second instance in that case, and that's also an option that we suggest to quite a few associations after decision of the electoral committee. Second instance would be your already existing appeal committee, and then in case of another dispute, then the matter would be sent to CAS for final decision. इसी तरह ये पहली दफ़ा एक आर्टिकल इनकॉर्पोरेट हो रहा है इलेक्टोरल कमेटी, जिसका काम है आपकी फेडरेशन के इलेक्शन सुपरवाइज करवाना, पीएफएफ के साथ जो मुंसलिक है उनके इलेक्शंस करवाना। इसमें एक 2 टीयर्स होंगे। लेट से आपके नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई इशू आता है, उसकी पहली बॉडी होगी जिसे कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस बॉडी, उसकी एक अपील की बॉडी भी होगी। अब ये वो कंसिडर किया जाएगा कि आया इलेक्टोरल कमेटी की अपील बॉडी अलग होनी चाहिए या एक डिसिप्लिनरी कमेटी के ऊपर भी अपील बॉडी है वो भी उस मामलात को देख सकती है, ये भी डिफाइन करेंगे। या तो जो ऑलरेडी हमारी एक अपील कमेटी है वो उसकी अपील भी सुन सकती है, लाजमी नहीं है कि दोनों अलग अलग अपील कमेटीज़ भी हों, एक इलेक्शंस की और एक वो डिसिप्लिनरी कमेटी के ऊपर जो अपील कमेटी आती है। Article 59, your judicial bodies. So in future you will have 2 judicial bodies, a discipline and ethic committee. So what will be new is that, and this is also a mandatory requirement from the FIFA statutes, you will have to deal with ethical matters. So it would be a joint committee dealing with disciplinary and ethical issues, and then your appeal committee, which you already have. So the requirements, what sort of members do you need? Usually lawyers or former lawyers, people that have the required experience. Also mechanism in case someone is no longer available within one of those committees, what needs to happen.
and the responsibilities and functions of those judicial bodies will be further defined in your, well, there would be a new set of regulations, a discipline and ethic code, so we might have to look again at the current PFF disciplinary code. I think we'll need to revise it once the constitution has been approved. We'll have to look at those regulations as well. एक आर्टिकल 59 इसमें प्रपोज किया जाएगा कि आपकी 2 टीयर बॉडी होगी, डिसिप्लिनरी एथिक्स कमेटी जो हमारी मौजूद है उसकी एक अपील कमेटी, और इसमें यह भी बताया गया कि जो उसके ऑफिशियल्स हैं, जो मेंबर्स होंगे, जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल होंगे, लीगल प्रोफेशन से होंगे, और उसके बाद जो भी उनकी एडिशनल, जैसे हमारा मौजूदा 2006 का PFM डिसिप्लिनरी एथिक्स कोड है, उसको भी दोबारा से रीड्राफ्ट किया जाएगा, देखते हुए जो लेटेस्ट जो फीफा AFC के जो कवानीन है उसके साथ इन लाइन हो. Article 60, this is also an article on, well, that goes more into detail of the responsibilities and duties of the Discipline Ethic Committee, the composition, the sort of sanctions that they would be imposing, and so forth. Also, the EXCO would be suing the discipline code or the discipline and ethic code, which would need to be revised, and so forth. Yeah. जैसे कि पहले बताया हुआ जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो गवर्न करेगी इन अकॉर्डेंस विद PFF डिसिप्लिनरी एथिक्स कोड, जो उसका एक अलग से कोड मिलेगा जो उसके ज़ाब्ते इखलाक होंगे, उस हिसाब से ये आगे गवर्न करेगी. 61, it's pretty much the same article but for the appeal committee, so you have the same provisions, but this time dealing with the appeal committee, providing the additional information for that committee. अपील कमेटी वही है, जैसे आप अगर लेट से नीचे आपका डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला खिलाफ आया, आप अपील दायर कर सकते हैं. जो अपील कमेटी होगी वो भी PFF का जो डिसिप्लिनरी एथिक्स कोड होगा उसके तहत गवर्न करेगी, चलेगी, उसके मामला तो उस पर देखे जाएंगे. मगर इसमें एक प्रपोजल ये है कि जो आपके इलेक्शंस की जो अपील्स हैं वो भी इसी कमेटी में आएगी. Yeah, that's right. The committee would hear, well, decisions taken by the Discipline Ethic Committee, but also the Electoral Committee, and then, as we said before, then any further decisions would be taken to CAS directly. जो अपील कमेटी के पास आपके पास फाइनल रेमेडी रह जाएगी वो CAS की होगी, आप फिर CAS में जाएंगे कोई भी अगर ग्रीव्ड है. Correct. 62, we go to discipline measures. This is very standard. I don't think we need to spend too much time on this. This is a kind of a copy paste of what we have at the level of FIFA and also AFC. So this is just to list the sort of sanctions that are available for natural and private person and legal persons. So we can move to 63. Arbitration, also very straightforward. So as we said a few times in the past 2 days, you have your internal mechanisms, so you have your different committees or judicial bodies. If a dispute cannot be resolved or somebody's unhappy about the outcome of those decisions, the appeal mechanism should be to CAS. This is in line with AFC, FIFA statutes. It's the best way to solve disputes. You stay within the actors of football. CAS is a specialized arbitration tribunal that deals with sport disputes, not only football but sports disputes. So they have the experience to deal with those cases. So yeah, there should be a clear process. Article 63 will define also what process needs to be respected by not only PFF but also its members, officials. Everyone will have to follow due process as defined in the PFF constitution. Yeah. जैसे पहले बताया गया कि आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद अपील कमेटी आती है. अपील कमेटी का आखिरी जो आप फैसला लेके जा सकते हो CAS में लेके जा सकते हैं. एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बना दी गई है जो आपके डिस्प्यूट से डील करती है, सबसे प्रोफेशनल बॉडी है और हाईएस्ट बॉडी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जा सकती है. इवन फीफा की जो अपील्स होती है वो भी वहाँ पे जो लास्ट रिजॉर्ट पे जाती है. तो इसको जैसे पहले प्रोवाइड किया गया है, इसकी आप अलग से डिक्लेरेशन भी देंगे कि हम CAS के फैसलों को रिकॉग्नाइज करते हैं. 64 jurisdiction. This defines which bodies has jurisdiction. So PFF has jurisdictions over internal national disputes. This needs to be defined clearly in the statutes. But FIFA AFC would have jurisdictions in case of international disputes. It's just to make clear which organization deals with what sort of disputes. Also, PFF must ensure full compliance
with any decisions taken by FIFA, a confederation, in that case AFC or CAS. So that will be an obligation on PFF to make sure that any such decisions are respected. So if FIFA or AFC or CAS would take a particular decision that would have an impact on PFF or one of its members, it would be PFF's responsibility to ensure compliance. जो आर्टिकल 64 है जुरिस्डिक्शन दायरा इख्तियार क्या है पीएफएफ का, जैसे हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, सूबे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लब्स हैं जो पाकिस्तान लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं, उनका कोई डिस्प्यूट आता है पीएफएफ उसको देखेगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का या किसी कंबोडियन फुटबॉल फेडरेशन का डिस्प्यूट आता है, उसके लिए एक फोरम है फीफा एएफसी, वो पाकिस्तान तो नहीं देख सकता, उनके लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम है फीफा एएफसी जो उनके सारे मामलात को देखेगा। इसी तरह जो भी फीफा एएफसी या कास का जो भी फैसला आता है, पीएफएफ ने ये इंश्योर करना है कि उसकी कंप्लाइंस करवाए इन इट्स लेटर स्पिरिट। 65, here we are starting the section on finance. So this is very straightforward. I don't think there's much to discuss because this is almost copy paste of what we have in the FIFA statutes. So financial period. I think the presentation can be shared in any case with the members now. So if in case there's anything you'd like to ask after that, feel free to do so. I think we can move to 66. Revenues, also very standard provision. Where does the money come from? I think that it's fair to have a list of the sources of revenue of PFF. 67 on expenses. Also, you need to define what sort of expenses PFF has. So you need a specific article on this. Sorry, I forgot Ali to translate. I was just carried away. If you can translate now. तो बेसिकली वही जैसे पहले है कि हमारा सालाना एक बजट होता है जो पीएफएफ को जो भी फाइनेंशियल दरकार होंगे वो जनरल सेक्रेटरी ओवरसी करेंगे, और जो है वो जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो कांग्रेस की अप्रूवल से होंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो पीएफएफ का जो बजट वगैरह होता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, वो कांग्रेस से एंड पे जब एक दफ़ा हो जाएंगे वो सारे, वो फिर कांग्रेस को अप्रूव करता होता है जो साल के एंड पे होता है। ये है वो बजट अप्रूव करता होता है जो हो जाता है। हाँ, जैसे अभी हमारे फीफा सारे अप्रूवल करता है, मगर वो जो एंड पे ना कांग्रेस को बताते हैं ये बजट हो गया है, ये आप देख लें, उसके ऑडिट रिपोर्ट होती है तो फिर उसको अप्रूव करना होता है। 68 on the auditors. Also, this is an obligation from FIFA to have external auditors or independent auditors that are appointed by the Congress for a period, usually a period of 3 years. That's what FIFA and FC propose. That would annually audit the approved accounts before they submit it to the Congress. They will also be providing an audit report on the financial situation of PFF. So this is defined in 68. कांग्रेस जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होंगे और वो एक 3 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे, और जो है वो फिर जो अप्रूव्ड अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से उनको ऑडिट करेंगे। 69 membership subscription, also defining the subscription that the members should pay as members. There's also the same article at FIFA. 70, sorry, let you translate. इस आर्टिकल 69 है, इसमें बताया हुआ है कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। जैसे पीएफएफ है वो एक अपनी सालाना एएफसी को मेंबरशिप फ़ीस देता है, इसी तरह जितने हमारे मेंबर्स हैं जिस कांग्रेस में वो एडमिट हो गए, जैसे आज कांग्रेस है तो जब अगली कांग्रेस आएगी उससे पहले वो अपनी एक मेंबरशिप फ़ीस होगी जो पीएफएफ को जमा करवाएंगे अपनी मेंबरशिप बहाल रखने के लिए। 70 settlement of this defines the PFS authority to debit the members' assets account to recover any outstanding claims in case this is needed. अच्छा, इसमें ने लिखा हुआ है कि जैसे हमारे मेंबर्स हैं उनके कोई अकाउंट्स का इशू आता है, कोई उनके डेबिट्स वगैरह का इन चीज़ों का इशू आता है, तो जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं तो उसके जो चीज़ें रिक्लेम वो पीएफएफ करेगी। 71 levies. Again, this is a standard provision that exists in both AFC and FIFA statutes.
PFF may require its members to pay a levy related to matches, may meaning that it may or may not. So there's no obligation, but it's for PFF to decide if this is indeed needed at some point in future. इसमें बताया हुआ है जो आपके मैचेस जैसे हमारे मेंबर है पंजाब वगैरह कोई मैचेस की लेवी होती हैं तो ये अब पीएफएफ की कांग्रेस डिसाइड करेगी कि आया उनसे उसके अखराजात एक्सपेंसेस वगैरह किस तरीके से लेने हैं क्या करना है तो ये भी अभी देखा जाएगा कि किस तरह इस प्रोविजन को करना 72 publication of financial data. This is something nowadays that we would ask our member station to do. It's an obligation, so we would like our member station to publish the approved financial document on its official website. So in future, once the constitution is approved, PFF would also have to do that. This has to do with financial good governance practices, transparency. People should be able to look at your statement or know where to find them. It's not only fair towards the members, but also towards the public at large or the government. They should be able to access that document whenever they want. ये गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल है जैसे कोई अखराजात होते हैं कांग्रेस एक्टिविटी वो रिपोर्ट जो बजट है वो जो अप्रूव करता है जो अखराजात होते हैं वो पीएफएफ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी लगेगी ताकि लोगों को पता हो कि अखराजात किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं जब एक दफ़ा कांग्रेस को सालाना अप्रूव कर दे 73 now we start one of the last sections on competitions. In your statutes you should have a list of the official competitions organized by PFF. The EXCO may also decide to delegate those competitions to subordinate leagues or members within its structure under certain requirements, and it may also decide to issue special regulations to govern the process. एक सिंपल सा आर्टिकल है अभी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड है कि जो पीएफएफ ऑफिशियल कंपटीशन अपनी टेरिटरी के अंदर कराती है उसको एक प्रॉपर लिस्ट के तौर पे उसका एक कैलेंडर बनता है एक्टिविटी कैलेंडर बनता है और अगर चाहें तो और वो एक्टिविटी कैलेंडर आपके फीफा और एएफसी इवेंट्स वगैरह के साथ भी ना कॉन्ट्राडिक्ट करें नंबर 1 नंबर 2 इसी तरह जो आपके मेंबर्स हैं पीएफएफ के रीजन्स है उनका भी एक कैलेंडर बनेगा जो पीएफएफ के इवेंट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो मेंबर को अगर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो जो सूबाई सतह में जो हमारे मेंबर्स हैं उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं कि आप इसको इवेंट्स को खुद कराएं जो नीचे लेवल पे 74 rights. This deals with the rights from competition or arising from competition. So PFF is the original owner of those rights of all competitions organized under its jurisdiction. This is important for legal aspects. You need to define who is the owner because it has also financial impact on the federation, and also defines, the rights of or the responsibilities that the EXCO has in this regard. That it ensures that the sale of those rights, if it were to happen, is done in a transparent and accountable manner. अच्छा जितने भी इवेंट्स हैं वो पीएफएफ की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं इसी तरह उन इवेंट्स के जो राइट्स हैं उसका सोल ओनर पीएफएफ होगा अगर हमने कोई राइट्स को आगे करना है तो वो एक्सको जो है ना वो डिसाइड करेगी कि हम उनको कितनी उसकी मार्केटेबिलिटी कर सकते हैं उन राइट्स की एक्सको इन सेंस ऐसे डिसाइड करेगी कि हम एक रेगुलेशन बनाएंगे उसमें बताएंगे अगर पीएफएफ अपने राइट्स किसी डिस्ट्रिक्ट को देना चाहता है आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराएं ये उसका ऑनर भी पीएफएफ है मगर पीएफएफ विद एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहें तो उसके लिए स्पेशल रेगुलेशंस भी बना सकते हैं मैंडेटरी नहीं है मगर बना सकते हैं 75 an article on the authorization to distribute, so the important to regulate also which is the distributor of those rights, and again the EXCO can issue special regulations to regulate the process if there's a need to. बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है लास्ट पॉइंट का कि पीएफएफ जो है वो इमेज और साउंड और उसके जो भी कंपटीशन के राइट्स होते हैं वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है और वही कि एक्सको के लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन जो हैं वो इशू होंगे कि वो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकें 76 on international matches and competition,
provides an overview of how international matches should be regulated, or what regulations need to be respected. In that case, the regulation of at FIFA level. We have special regulations also regarding international matches. PFF will also have to comply with the international match calendar established by FIFA. This is basic, but it also needs to be mentioned in your constitution. तो ये तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है कि पीएफएफ को फीफा के जो इंटरनेशनल मैच कैलेंडर है, खासतौर पे जो विंडोज़ में आप इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हैं, तो उसके साथ हमें कंप्लाई करना पड़ेगा. 77 contacts. Yeah, this is also important, that it reiterates the fact that in case of suspension or a non-member FIFA, PFF is not supposed to entertain any sporting contacts. This is to ensure that football can be played within the established football structure, that you don't have a separate entities playing different competitions that would not be sanctioned by FIFA or the confederation. इसी तरह जो है वो हम एज पीएफएफ हम किसी स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं होंगे विद एनी बॉडी दैट इज नॉट एफिलिएटेड विद फीफा और एएफसी. Yeah, 78 approval. Yeah, this is about joining or the possibility of joining other association or participate in other competitions. This is also quite unusual, but it can happen. We have a few cases around the globe, but that regulates that aspect of joining another competition based outside of your country. Obviously, you would need to request the approval of FIFA, the relevant confederation, as is usually the case. पाकिस्तान की टेरिटरी में जितनी फुटबॉल है उसको गवर्न पीएफएफ करता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल सा केस हो जाए कि किसी को पाकिस्तान से बाहर कहीं पर खेलना हो, तो उसकी जो सोल वो है ऑथराइजेशन जो है वो पीएफएफ देगी. 79, we now reaching the end of the statutes. 79, that's also an important provision, because it defines that the EXCO has the power to take decisions in case of force majeure, or in case there's a matter not covered by the statutes. It might happen that a particular point is not covered by the statutes. Nobody thought about it. Which body would decide that article, which is also a standard provision? The EXCO would have the power to decide. ये आर्टिकल अभी हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरीक़ाकार वाज़िया नहीं है, कुछ मिसिंग रह गया, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको डिसाइड कर सकती है. अगर कोई चीज़ प्रोवाइडेड ही नहीं है, कोई मिस रह गई है और हमने सोचा ही नहीं था कि ये हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी उस पर कोई डिसीजन दे सकती है. There's, however, the obligation in that process to comply with the FIFA and AFC regulations. So it's not that the EXCO can take whatever decision it wants. It has to comply with the FIFA and AFC regulations. So it gives the EXCO has some kind of a framework in which those decisions are taken, and it also needs to apply mandatory law. If there's any law applicable in Pakistan, it would also have to comply with those laws. उस सिचुएशन में अगर एग्जीक्यूटिव फैसला लेती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है चीज़ें, तो सबसे ज़रूरी आपने देखना कि आया फीफा और एएफसी रेगुलेशंस को वो फैसला वायोलेट तो नहीं करना, तो गाइडेंस आप फिर जाके अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव फीफा और एएफसी से लेगी. Article 80. This is also something nowadays we would ask our member associations to do for question of transparency. In future, you will have to make sure that a number of documents are published. So not only the financial documents, but also your statutes or your new constitution should be published on your website. Discipline, ethic code, major decisions, the strategy. The strategy should for FIFA and AFC also. Any football strategy should be published on your website. It should be a public document. People should know what the strategy of the federation is. I think it's absolutely necessary. With this article, you will have to comply with those publication. It's also fair towards the general public that they know that it shows also more transparency towards the public in general and the fans. जैसे आप मौजूदा हालात में देखते हैं, हम कोई डिसिप्लिनरी कमेटी का डिसीजन करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी
कुछ सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, हम वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, वेबसाइट पे भी लगाते हैं, तो इन चीज़ों को हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाएं ताकि पब्लिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। 81 dissolution, while in case PFF would be dissolved at any stage, we don't think that this will happen. It hasn't happened for a very long time among the 211 member stations. But we need a provision that defines the process in case of dissolution. एक डिसोल्यूशन का स्टैंडर्ड क्लॉज होता है हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारी कांग्रेस चाहती है कि हम पीएफएफ को ख़त्म करने लगे हैं तो उसके लिए एक क्लॉज है स्टैंडर्ड के 3/4 मेजॉरिटी बैठ के विद स्पेसिफिक रीजंस। ऐसे नहीं है कि अभी आप सुबह उठेंगे जी एक हम बंद करने लगे, पीएफएफ ख़त्म लगे मगर विद स्पेसिफिक रीजंस आप इसकी डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, मगर वो एक तरीका कार प्रोवाइडेड है। 82 enforcement. So when the new statutes would be enforced, the adoption date. This is more the legal stuff. I think it's more for the lawyers, but important to have for legal reasons, signature and so on. Very standard. ये एक enforcement है, जैसे हमारा आइन 2003, 4, 7, 11, 14, 25 में अमेंड होता आ रहा है, तो हम उसकी एक हिस्ट्री को भी ट्रेस करते जाएंगे कि इस डेट से इसकी ये प्रोविजंस भी अमेंड हुई है। तो ये स्टैंडर्ड होता है हमारे आईने पाकिस्तान में, हमारे जितने भी कवानीन हैं उसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि उन डेट्स को मेंशन किया जाता है कि इस तरीके से इस साल तक इतनी दफ़ा अमेंड हुआ है और ये आर्टिकल जिसके अमेंड हुए हैं उसकी इन्फोर्समेंट डेट भी लिखी जाती है। And the final article, transition provisions. This is an important article because it will define, it will ensure that there is a smooth process between the current constitution and the new constitution. We were talking about, how long would the members have to comply with certain requirements. So that provision would also be regulating this, that you have 12 months to adopt your new statutes. Also, what would happen to the standing committees, so you would be transitioning from a number of committees to a new number of committees under the new regulatory framework. You need to have provisions that define this, otherwise you have uncertainty, otherwise you have a bit of chaos. So we will be providing also clarity for that transitional period. So we move from the old constitution into the new one with clarity. ये एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न होती है, बड़ी ज़रूरी है कि जैसे हमारी इस टाइम है 26-27 स्टैंडिंग कमेटीज़, अभी जो प्रपोज की जा रही है उसमें 7 है, तो 12 महीने के अंदर हमने जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पर रिवाइज हो जाएगा, 12 महीने के अंदर हमने उसको 7 में रिड्यूस करना है। इसी तरह हमारे कुछ मेंबर्स हैं, अगर हम उन मेंबर्स को एडमिट कर लिया है तो उनका जो तरीका कार है वो 12 महीने के अंदर हमने उनको मुकम्मल करना है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए मौजूदा कवानीन के हिसाब से, तो 12 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से बेहतर करना है। That's it. And to finish with, we have also here an overview of the content of the questionnaire for integrity checks. So this would be a document that will be attached to the statutes at the end of the statutes, a document that will have to be filled out by any candidate for any position while in the EXCO positions, and some of the committee of PFF, they will have to fill out that questionnaire, which is based on the FIFA integrity check questionnaire, so it's very standard, and then the questionnaire would be analyzed or would be processed by the electoral committee prior to elections. जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, आप किसी इलेक्शन के लिए आप लड़ रहे हैं फेडरेशन में या किसी सूबे में कहीं भी, तो एक क्वेश्चन एयर होगा, इसमें आप बताएंगे मेरा सबका रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल, जितनी भी उसकी एक चेक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसको टिक करना है, वो इलेक्टोरल कमेटी को जमा कराना है, फिर वो देखेगी आपका कैंडिडेचर वैलिड है कि नहीं। वो एक प्रॉपर इंटेग्रिटी चेक है जो फीफा AFC में और हर मेंबर एसोसिएशन में होता है। That's it. So I think we're reaching the end of that long presentation. But it was important for FIFA and AFC to go article by article to give you a good overview of the content of your future constitution. So thank you for your patience. And I think we can open the floor for questions or anything you'd like to comment or raise. Feel free to do so. Yes. Hello. My question is from Rauf Tanner. You have repeatedly told us that General Secretary is the key position to run the Secretariat. Yes,
and he has many duties and obligations. It has been more than a year, so why has the position of General Secretary still not been filled in PFF? My first question is that, and my related question is that the COO is performing the duties of General Secretary. Is there any instance in PIPA and AFC? Is there any post of COO? Well, on the first point, I think it would be more appropriate for PFF to answer because it doesn't concern FIFA and FC directly. But yeah, Mohsen? Yes, as you know, Rolf, we had some governance-related issues, and we had some difficult times even post-election. We had our Congress where we had to have an election, and it was not everybody attended. So therefore, there's been some delay in appointing the General Secretary. The whole post has been politicized. So I think the best solution to appoint a General Secretary, in my opinion, is complete the process of constitutional amendments. That is, I think, the right way, because if you look at the constitutional amendment, it sets out the criteria for integrity checks, for all sorts of things which were not present there before, number one. Number two, I will leave the floor to you for the second question, but I'm also a member of the FIFA Youth Football Committee, and I can say that yes, the FIFA also has a COO. His name is Kevin. Is that right? Yes, here at FIFA we have a similar position, yeah, COO within FIFA. Well, we have in some associations at times you have a vacant position. It can happen that the position of the General Secretary is not occupied. It's not uncommon. You can have, for legal reason or for other reasons, you can have an a person leaving his position or resigning. It's not uncommon, but obviously FIFA's guidance or FIFA's recommendation would be to make sure that the position is filled in due course, complying with the requirements of the statutes. Also that the right person is found. That's also our advice, but obviously the advice needs to, the recruitment needs to happen under the right condition. I think it's more for PFF to decide when the time is right than for FIFA to say, oh look, you need immediately to have someone on board. Yeah, that's my view. Usually we leave it to the federation to deal with this, but again, it's important to have the right people in place in the right time. Yeah. The working is done on this by PFF side. They advertised it, and nomination papers were submitted, and they interviews the persons, their presentations. All things are done. Just nomination, just proposal from our respected president, and voting from our EXCO. It is remaining. Yeah, well, it will have to be done at some point, but I think it's also important for the PFF president to find the right person, because they will have, him and Mohsen and the GS will have to work together in the best possible way. Yes. He needs also to make sure that he finds the person with the qualities he's looking for. I think that's elementary. You cannot just pick anyone. We cannot just focus on the post. We have to also look at the process, right? Yeah. The process also has to be right. And I think maybe you want to, if some people want to insist to have just specific person, that's also something which we need to discuss. But at the onset, I would say that the important thing is to follow the process. And now we are following the process of setting our governance structure, the rules and regulation, which have been missing for a long, long time, over more than a decade. So once we set that, I think everything will fall into place. And inshallah, of course, we need a General Secretary, and we will have the right person, of course. Yes, thank you, President. My second question is related to proposals in these articles. Article 56. Why have independent bodies not be elected in PFF? Because these judicial bodies are
coming from that normalization committee period. It has been a year. Why not we completed these bodies? Well, you cannot have independent committees now because you don't have the new constitution. Yeah, it can only happen if you have the new framework. At the moment, you have the committees that were elected under the current framework. You know, you cannot add committees now because the current PFF constitution doesn't provide for independent committees, unfortunately. But it's something we want to change. In future, a PFF, once the statutes are approved, they will have about 12 months, I think a year, to make sure that all these independent committees are formed. So that's when they will have an obligation to make sure that those bodies are existing. But at the moment, you know, PFF is not under an obligation to do it because the new statutes have not yet been approved. Yeah. And I think, Rolf, there's one more important thing there, right? That's really important. Like, at the end of the day, if you look at PFF, I mean, PFF is like one of the only federations, a very rare case, which was under the normalization committee for so many years, right? So I mean, of course, we have a lot of catching up to do, and we cannot just, you know, if a federation has been sleeping, or sleeping in the sense that there hasn't been an elected body, that you just get up and start running. Of course, it takes some time for the new management and leadership to get it all in process. I think what you're doing today and what you did yesterday is an important part of that process, part of that journey. So we need to set the right process and set the right rules. And once we have the right constitution, the right provisions, it will automatically enable us to select the right people. Yeah. In absence of the right tools, you can't build the right house, right? So it works hand in hand. It's important to emphasize the importance of why we need a proper constitution that's aligned with the FIFA and AFC, and why it needs to have these provisions which protect us and help us govern in a more transparent and credible manner. Absolutely. At the moment, we have a system that's not in line with the FIFA statutes, unfortunately. At the moment, the PFF president can nominate the members of the judicial bodies, no? That's what was done under the current statutes. Who elects the judicial bodies? Under the current statute, there is a contradiction. There is Article 434, which says it's executive committee who appoints. Yeah. So by virtue of this, normalization committee was acting as an executive committee, so they were mandated to appoint that bodies. On the other hand, it also says, then there is also a contradictory article of which says it's Congress who elects those bodies. Okay, yeah. There is a contradiction. Yeah. Yeah, well, in that case, the new constitution will clarify that those misunderstanding. It would be clear that it's the responsibility of the Congress to appoint the members of the independent committees, but you cannot have this because you have those contradictions at the moment in the PFF constitution. Yeah. In incumbent that constitution, it is already clarified that Congress will elect these committees. Well, those bodies were already in place, so we had previous decisions that were taken and not challenged. Also, any decisions that actually is not challenged will become binding at some point. So that's in the situation we are in. But I can assure you that with the new constitution, you will have clarity on the process, appointment of members of the electoral committee, of the judicial bodies and so forth. The process would be a lot clearer to everyone. At the moment, the problem is that we have a constitution that is not clear, that is lacking, and that is, at the end of the day, not in line with what FIFA and FC want. Yeah, but we will get there. I'm pretty confident we will get there soon. Yeah. Thank you, and thank you, President Mohsen Gilani Saab and Rauf Tunnel. मालिक भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरह हम फुटबॉल का मैच खेलते हैं, अब फुटबॉल के मैच के रूल ही क्लियर नहीं, ठीक है? तो फिर आप खुद माशाल्लाह सारे फुटबॉलर, तो मैच कैसे होगा? अब यही नहीं पता कि हैंडबॉल क्या होता है या फाउल क्या होता है, ऑफसाइड क्या होता है. तो ये फीफा वाले और एफसी वाले ना इस बात को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके रूल्स क्लियर होंगे तो आपकी गेम भी आसान हो जाएगी. आपने एक सवाल अच्छा किया कि देखें जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं बने, लेकिन जब एक हमारा प्रोसेस ही, हमारे अपने रूल्स जो हैं वो कहते हैं जी पिछले 15 साल से चेंज ही नहीं हुए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तो
तो जब हम अपने रूल्स को ठीक करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर आपके राइट्स भी आपके सामने क्लियर होंगे। कल दूसरे भाई कह रहे थे कि जहरी भाई के राइट्स नहीं पता, लेकिन राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं ना, अब आपके राइट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। आपका इलेक्शन क्यों है, आप क्यों आए हो? अच्छा, मैंने कहा शायद अपनी बात आप कर रहे हो, मैंने कहा आप भी तो उसी रूल्स के तहत आए हो ना, मैंने कहा शायद अपने इलेक्शन को आप नलीफाई करो। भाई इलेक्शन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा ना, ये बताओ। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन चेंज करेगा? भाई मैं आपको एक जवाब देता हूँ, आपने पूछा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फीफा के साथ अलाइन नहीं है। Rolf, this is a very interesting question, okay? He's saying that if the constitution is not aligned with FIFA, why did you hold the elections? And I said to him that in order to change the constitution, you need an elected body. If you don't have an elected body, you can't change the constitution. Who else is going to change the constitution? Yeah, no, that's right. I think in recent past we were in a situation where, well, elections had to take place because it was the mandate of the NC, or the mandate that FIFA gave to the NC. We had to do quick fixes. You know, what was amended last year for the elections was to guarantee democratic elections, which was part of the mandate. Obviously, it was only a small change that was made to the constitutions, but it didn't mean at the time that FIFA was happy with the constitution. You know, we were happy with that particular provision because it guaranteed that we had fair elections. But with the rest of the constitution, we were far from happy. The same for AFC. That's why we need that revision. It couldn't happen before because the conditions were not there. But again, it's the right time now to act and take the right decision. Mr. Asghar Sani is saying that there are a few stakeholders who were banned by PFF judicial bodies, but they were never been given an opportunity of hearing, which in our case is also against the fact we have provided them an opportunity of hearing. It is also the standard provision of FIFA and PFF. The judicial bodies are not always obligated to hear the parties in person, but as long as you receive a written explanation or replies, then you can proceed with the decision. This is what the standard provisions are. But as per my knowledge and understanding, the opportunity hearings were awarded to almost every members who were who against whom or against or those in whose favor the decision have been passed. Is there why the opportunity? Or again, it is a question which it is upon the PFF to answer, I guess. Yeah. Well, those decisions were taken a long time ago. Also, on the legal side, we know it as lawyers. There is no way we can now review those decisions. There was a time to review them. There was a possibility for the parties to appeal if the deadline is missed. Unfortunately, I mean, otherwise you would start reviewing decisions taken 20 years ago. Or when do you stop? Or when do you start reversing decisions? It would be total nonsense. There is a process that needs to be followed. But again, the new statutes will provide clarity on this. We will have more detail. I think it will also be fairer on anyone who wants to appeal any decision taken by any PFF body. The statutes would be clear. The statutes will be published also on PFF website. It will give anyone who is unhappy about the decision of PFF the possibility to appeal if the person wants it. Rolf, I would like to say one thing, that it's really important that we keep talking about why is it so important that we have to change our statutes. What is the need? I mean, there's many reasons. They're not updated according to the requirements of FIFA FC. They're not clear. They're sometimes contradictory. But one very important thing, एक अहम चीज़, I'll speak in Urdu. एक अहम चीज़ ये है कि बार बार इस बात पे फीफा और एएफसी वाले क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, वो तमाम बातें जो मालिक भाई ने कहीं या कोई और
बंदा उसको रेज करता है कि यार एक चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है, इतने सालों से वो जो है ना अप्रूव नहीं हुआ, जिस माहौल में जिस वक्त मालिक वो अप्रूव हुआ था उस वक्त कुछ और हालात थे, उस वक्त सिस्टम कुछ और था फीफा का, AFC का, अब हालात और हैं। तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे जो आप बातें कर रहे हो, लेकिन जब तक हमारे पास वो कवानीन, वो अब जिस तरह आप देखें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कमेटी किस तरह बनेगी, उसको भी एक इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है क्योंकि सारा का सारा स्टैचूज जमहूरियत के सिस्टम पे चलता है। अगर इलेक्टोरल कमेटी हम बनाएंगे, जब तक वो ड्यू प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, उसमें वो रेलिवेंट लोग नहीं होंगे, तो वो इलेक्टोरल कमेटी नहीं बन सकती। फिर बाद में ये बहस नहीं होगी यार कैसे बनी, क्यों बनी, इसने अपनी मर्जी का बना लगा दिया, उसने अपने लगा दिया। प्रोसेस को ठीक करें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर आपको अपने रोल के बारे में भी कोई जो है ना वो नहीं रखा, शको शुबा नहीं रहेगा। फिर आपको अपनी पावर्स के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया की तमाम फेडरेशंस में होती हैं। वन थिंग Rolf, I want to say on record, like it is not just about Pakistan. FIFA requires this from all of its 211 member associations, and AFC requires it from all of its 47 member associations. So this is not something specific to us. We are just very, very late because we haven't been amending our statutes for such a long time. Part of the reason is because we did not have an elected federation, but now we do. So it is very important responsibility that we have, that we look at कि हमने अपनी गवर्नेंस को किस तरह बेहतर बनाना है, ताकि मुस्तकबिल में कभी भी किसी बारे में ना शक शुबा हो और हमारी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रहे। मेरा सवाल ये था कि एक तो जैसे वेटरन का वोट आ रहा है, या जैसे बीच फुटबॉल का आ रहा है, इस तरह के फुटसॉल का आ रहा है वोट, तो एक तो उसमें ये था कि मैं ये वो चाह रहा था कि वॉकिंग फुटबॉल जो है वो ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्या हो सकती है? वॉकिंग फुटबॉल जो आजकल अभी चल रही है इस वक्त, वॉकिंग फुटबॉल वाली, अच्छा, उसके वोट के हवाले से पूछना चाह रहा था। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या इनका भी पूरा इसी तरह ही आप डिज़ाइन करेंगे, जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की टीमें हैं बाकायदा, उस टीमों के तहत डिस्ट्रिक्ट के तहत, सूबे के तहत ऊपर फेडरेशन, इसी क्राइटेरिया के तहत आप ऊपर ला के वोट दिलवाएंगे, या क्या तरीक़ाकार होगा उसका वोट का? और दूसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में ख़वातीन मेंबर नहीं है, तो उसके लिए जैसे ख़वातीन मेंबर का इजाफा कैसे करेंगे आप? अच्छा, ख़वातीन मेंबर का इजाफा पहले, ही इज़ आस्किंग 3 questions. First of all, he asked how would we add female members to our executive committee, because we currently don't have female members, and we already have that process in place. We have the process of adding, the executive members can only be elected through the Congress. The Congress needs to vote to elect female members. Secondly, he asked how, if we can add walk-in football into the membership, because we spoke about beach soccer and we spoke about women's football, we spoke about futsal, but walk-in football is not under the domain of FIFA, as far as I know. Rolf, is walk-in football under the domain of FIFA? I'm not quite sure what this is about. Yeah, what sort of football are we talking about? Yeah, I'm not really familiar with it, but he's saying that walk-in football is something. Walk-in football, yeah. Yeah, but it's not under the domain of FIFA. We can only include things जो FIFA के domain के अंदर आती हैं, और वो ये सारी चीजें हैं. Yeah. Yeah, no, it's not something that FIFA would regulate for sure. Yeah. There are other types of football. I mean, you have golf football also, which is very unique. You know, you're playing football, golf, but with a football. Actually, you have a few of these special type of ball sports, which at the moment FIFA doesn't regulate. So, I mean, it's outside of the responsibility of FIFA and also of our member stations. Yeah. And the third question he asked is, how would we add these members to our current structures, to our Congress? How would we add them? Like a Women Football Association, would it work at a district level? So I said, I don't know. This is something that needs to. My answer is, it's something that needs to be defined. But essentially, देखें, ये तो फिर हमने मिलके इसको देखना है कि अगर वुमेन एसोसिएशन का वोट होगा या प्लेयर्स का होगा, तो पहले उनकी एक एसोसिएशन बनेगी, उनकी एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे, जिस तरह हमारे भाई बैठे में रेफरी वाले, उनकी एक एसोसिएशन है, उनके इलेक्शन होते हैं, उससे फिर लोग इलेक्ट होके कांग्रेस में आते हैं. इसी तरह मेरा ख्याल है कि जो भी एसोसिएशन है, भले वो बीच सॉकर हो, भले वो वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन हो, भले वो फुटसॉल एसोसिएशन हो, उनके अपना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका अपना एक कवानीन होना चाहिए, और उनका अपना एक इलेक्शन होना चाहिए. So my response is just my response. I said this is something which we need to still define, but
really, if we create Women's Football Association or Futsal Association or Beach Soccer Association, it needs to have its own set of rules and regulations, and then they need to have their election, and then they send their representative to the Congress. Very similar to what we do with the Referee Association. Yeah. So the Referee Association, Rolf, they have their own elections, they have their own members. They elect their president to send to the PFF Congress. Over to you. Yeah, well, this should actually function in the same way. As you already have a referee association, a kind of a experience with a member that was that joined the PFF Congress at some point, you can replicate it with other stakeholders. Yeah, but yeah, it's absolutely crucial that you have statutes, that the new members have statutes. That's why we're giving them time to adjust or to make sure that they comply with this, that they have elections and so forth. PFF should be providing guidance and assistance to those future members, and that's what we do elsewhere. You know, in one country, all of a sudden you might have a player association which didn't exist before, and it's legitimate for a player association to become member of an association. So then there should be a process to allow the future new member to join the association. They are part of the football ecosystem. You know, sometimes we see them as like, oh, why are they joining our Congress? You know, like competitors. We shouldn't see them as competitors. We should see them as allies. That they are part of the same football ecosystem. They are all contributing also to football in their own ways. Yeah. वो कह रहे हैं कि ये जो है जिस तरह प्लेयर्स हैं ये फुटबॉल के सिस्टम का हिस्सा हैं, और हमने इनको ये नहीं देखना कि ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों बैठना चाहते हैं हमारी, और या इनको हम किसी कंपेटिटर के तौर पे देखें यानी मुकाबले के तौर पे देखें, लेकिन उसका एक तरीकाकार जो है ना वो एग्री होना चाहिए कि किस तरह वो एसोसिएशन बनेगी, किस तरह उनके नुमाइंदे आएंगे, लेकिन प्लेयर्स को अपनी कांग्रेस में अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा सवाल लॉर्ड कर्नल साहब से है कि जो कांग्रेस मेंबर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको इस तरह ना करें कि न्यू स्टेजियो में जो है कि हम प्रोविंस में कुछ मेंबर को बढ़ा दें हर प्रोविंस में, बजाय ये कि हम फिलहाल किसी और तरफ जाए, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इलेक्टेड बॉडी आई, तो इलेक्टेड बॉडी को हम सारे एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, हमें चाहिए कि हम उसको मजबूत करें, हमारे कोई भी अगर वो क्वेश्चन हो तो हम रिजॉल्व करवाएं अपने प्रेसिडेंट से। तो ये मेरा सवाल ये कि अगर हम इसको प्रोविंस में अगर कांग्रेस मेंबर बढ़ा दें और वुमेंस का भी जो है ना प्रोविंस को भी अगर दिया जाए कि एक हर प्रोविंस से एक वुमेंस जो है कांग्रेस मेंबर हो तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। He's saying that why don't we increase the membership of each province to enhance the proportion of provincial membership in the Congress, and he said instead of like having associations, he wants to suggest that maybe each province can have female members coming from the province, and then they can be part of the provincial nominees that go to the PFF Congress. So yeah, okay, Rolf, do you want to suggest? I mean, my answer is you can suggest this, and but this is also something which I think you have in your mind, that at the provincial level we also need female membership. Yeah, well, this is we need to guarantee more representation of women. You know, not only in the EXCO but also in your Congress. That might be a solution. I mean, we are looking at different options based also on experience we've made in other member associations in other countries of similar size. You know, looking at their football ecosystem. What can we do in order to guarantee that you have more women representation? That might be a solution to add, you know, member or delegates to a member and include, you know, as mandatory elements to have at least one woman per member, for instance. Yeah, and these are all things we're currently looking at to see what's best for Pakistani football. There's not just one best option. I think we will need to look at various options also. That needs a bit of more internal discussions also between FIFA and AFC to come up with the right formula for Pakistan. Yeah.
Sir. Sonam, for your intervention. आप कुछ कहना- last हाँ, question. हाँ, नहीं नहीं सॉरी मैं देखा नहीं आपको। ठीक है, ये ख़वातीन के हवाले से जो बात हुई, फीफा के कवानीन के आर्टिकल 11, 14 और 15 के हवाले से स्लाइड बनाने के सिलसिले में ये वजाहत की जा सकती है कि किस तरह बगैर किसी कानून की बुनियाद के 3 ख़वातीन को बगैर किसी अमल के NC की तरफ से यकतरफ़ा तौर पर बराह रास्त 3 ख़वातीन मेंबर बनने के लिए मुकर्रर किया गया, जिसका इंतखाबात पर बड़ा असर पड़ा। क्या यह गुड गवर्नेंस में आता है? Okay, need to translate for you, Rolf. He's saying that his question is regarding the 3 current female members of the Congress, who he says that were appointed by the Normalization Committee, and does that come under good governance? I mean, that's the process that was agreed. Yeah, well, it was a process that actually, yeah, was agreed at the time. Again, it's a decision that cannot be undone. What is important is to look at the future, you know, what would be the future composition of the PFF Congress. We will ensure that we have women representation, but in a form that is more structured, more organized than what you've had until now. So you will not find those 3 women, you know, in the same form. You will have a football women association where you will have women. Obviously, I mean, it would be wrong to send men to a women's association. You will have a representation of women, but in a different form, in a form that's more, let's say, structured and clear. But for this, you need a new constitution. Yeah, that's what I can tell you now. You know, what is in the past is in the past. I think you have to look at the future. You know, what do you want to have as association, as federation in future? I also want to encourage you. You know, I think it's the time for you also to take a decision. Obviously, it's not today. Today we just went through the different articles, but there will come a time that you have to take the decision. You have to take the right decision. You have to ask yourself, what do you want for the future of Pakistani football? What structure, what organization do you want? वो ये कह रहे हैं कि ये जो हो गया वो हो गया है, अब उस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त का प्रोसेस था। अगर हम पुराने गड़े मुर्दे को खेलेंगे तो मसला होगा। और आपके वो कह रहे हैं कि आप मतलब पुरानी बात करने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। हम पाकिस्तान फुटबॉल के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बार बार अगर हम पुरानी बात करेंगे तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब उनकी बात का खुलासा यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वी कैन क्लोज दिस इंटरवेंशन नाउ एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।